सभी अपने अपने फ़ोन साइलेंस कर दें। तुम सब भी, मीन आप लोग, ठीक है। आशु, आशु, बता कर। Hello everyone, I hope you're having a wonderful day because it's only going to get better from now. I'm your host for today, Simran Goswami, and I'd like to welcome you all to this seminar, Prerna, Rise Beyond the Limits. This seminar is mission to help students find their career path and streamline their journey, provide them with the guidance they need to achieve their dreams. Now, I would like to thank our partners for making this event possible, our venue partner Plutus IAS, our ebook partner Online Khan Market, and our e-commerce partner Examophobia. With that, our knowledge partner Apti Plus, AKS IAS, and Raj Manotra IAS Academy. Okay, now let's talk about the elephant in the room, career. It is a topic that makes anyone retreat into their shell, but not after this seminar. After today's event, you will be undoubtedly be more focused and have a clear vision of your goals. We are going to discuss some very interesting topics such as what are the essential or attributes that make a successful career, what strategy can help manage their time effectively while preparing for UPSC, what impact does current affair knowledge have on the overall performance in the competitive exam. To address these queries, we have with us an eminent guest. Please give them a all huge round of applause. As a token of our appreciation, we have a special gesture for our esteemed guest. Please join me in welcoming Ms. Rashmi Rawat and Priya Biswal, who will be presenting each of our guests with a beautiful bouquet. Now, let's begin. We have our first guest, retired IAS officer, Dr. Subramanian Lakshminarayanan, who will speak on the common challenges faces during the UPSC journey and how to overcome them. Lakshminarayanan sir has worked in multiple government sectors like in the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Information and Technology, and many others. He has represented India and various forums, has made our country proud. We are eager to hear the insight and wisdom he'll share with us. Without further ado, I would like to invite Dr. Subramanian Lakshminarayanan to stage. Please give a big round of applause. Yeah. Respected members of the dais, my esteemed colleague from the IAS, Mr. Chaturvedi, young boys and girls,
It's a matter of pleasure for me to be participating in today's seminar because both me and Chaturvedi and so have many other IAS officers seen enough of challenges in our life, and even after retirement I'm sure Chaturvedi I think he's been heading some big bank and all that. I have been chairman of the largest NBFC in the country for about 15 years, Sri Ram Group. I am still an independent director and chairman of 6-7 listed companies. I am also the Supreme Court appointed administrator of Leelavati Hospital in Mumbai, and I am also an arbitrator for many cases of NHAI, plus chairman of 6 DRBs, which is Dispute Resolution Board. But having seen enough of challenges, it's always a pleasure to see young aspirants like you, because maybe 55 years back, I have been through the same kind of challenges, same kind of anxieties, and same kind of worries. Of course, nowadays there is a plethora of so many academies, but having post-graduated from St. Stephen's College, I was advised, and there used to be only one Rao's IAS study circle being held in the terrace of Hotel Palace site. The hotel is still there. I'm not sure whether IAS Academy Rao is there. Rao is no more. But in his name I find there are some few academies, but Rao used to be a guide for many people. I have done my master's in chemistry, and those days, of course, slightly now things have changed, or they have greatly changed. I was told that you have to now take 3 subjects of the level of an honors degree in the lower papers and 2 of the papers in the higher this thing. I think this was there up to 1975. I am from the 1970 batch of the IAS. So that was my first attempt, but I made it in the first attempt. So I post-graduated in 69, and 1 year I was with Rao. I didn't know ABC of history because I have been throughout a science student. But then I was advised by Rao, you should take Indian history, British history and Mughal history. So I told him, how do you expect me in 1 year's time to complete all this in 1 year? And of course I need to keep brushing my chemistry also, because I have also opted for lower chemistry and higher chemistry. But he said, no, you opt for this, we'll help you. But he also told me, don't try to be a scholar. This is a competitive exam. Time availability is constrained. So you need to understand the essence of what is required and develop on that. So maybe a very, not a very popular word or an uncouth word would be kunji. But he said that you should have the key points. This is what a kunji does. Okay, because one used to, and he said, let me analyze for you what are the basic topics which will come in Indian history, British history and Mughal history. And I will analyze that for the last 10 years and tell you these are the topics you should understand. Just on those topics, read one basic book, and then we will give you quotable quotes as well as the bullet points. So those days it used to cost me 3 rupees. I bought a book called L. Mukherjee, which is about Indian history. And then I bought a book called Rayner on British history. Both I got second hand in Naisadak, because all of us, like you must be having now, have constraints of, spending too much, then paying to the academy, paying to Mr. Rao, and then also being jobless, and your parents are saying, ये तो MSc करके बैठ गया, अब इसको पता नहीं 1 साल या 2 साल लगेगा, कितना लगेगा. So anyway, my father was from the Central Secretariat Service. He was that time a deputy secretary. He said, don't worry, you are my only son, but read these books.
So let me be very frank with you. Though I scored very good marks in history, and ironically, in one or two history papers more than chemistry, where I had done a master's from St. Stephen's College, Delhi University, by reading only these kunjis and the bullet points. So if you are wanting to be a scholar, then you should become a professor of history or a professor of whatever science or subject you are taking. There we require scholars. What you need to achieve with the help of these academies and the scholars available here, professors here, is using their knowledge and getting the essence of the subject and the topics which you feel these people are going to predict for you may appear in your paper. I don't think that has changed. That is the same trend. I'll just give you an example. I have never read a book called Lane Pool about Indian history. But Mr. Rao used to give me those bullet points, and he had quoted that the Mughal Empire collapsed after Aurangzeb, and he quoted from Lane Pool. Lane Pool had written in his book. Somebody who is a history student must have read Lane Pool also. Till today I have not had the time to read Lane Pool. Which the quotable quote which I still remember is, the later Mughals looked towards beauty and turned away from duty. What he meant was that the later Mughals wasted their time with women, with gambling, with playing chess and this, that, and didn't concentrate. With the result, one by one, all the people who were part of the Mughal Empire separated, and at the end of the day, that last fellow after Aurangzeb, his empire extended from Red Fort to Chandni Chowk, and he died a very miserable man. Anyway, I had read Mukherjee also on that subject, but then I'm just telling you in the IAS interview, which was headed by then Lieutenant Governor of Delhi, Mr. L.K. Jha, and some other members of the UPSC had Mr. Raghubir Dayal, who was the ex-foreign secretary that time, Rajeshwar Dayal, and one or two other people. I think there was a 5-member board. So they asked me, you have done chemistry, masters in chemistry, you have taken history. We don't want a lecture. Can you summarize in one sentence, why did the Mughal Empire collapse after Aurangzeb? So they talked among themselves. अभी तक तो कई हिस्ट्री लोगों से अपन भाषण सुन चुके. Let me see, being a science chap, can he summarize it? So I said, sir, if you permit me to quote from Lane Pool, which I had never read, I'm telling you in truth till today. Oh yes, have you read Lane Pool? I just kept quiet. Yes sir, if I can quote from Lane Pool. I didn't say yes or no. I said, sir, if I can quote from Lane Pool. He said, go ahead. I said, the later Mughals looked towards beauty and turned away from duty. They said, brilliant, brilliant. And he said, Mr. Jha said, I'm a history student. I think we have interviewed before you 25 guys who have done masters in history. They couldn't summarize this the way you have summarized it. It's good that you led Lane Pool being a chemistry student. So I would still, even though I had completed 38 days in the IAS, now 16 years in the corporate, I still remember Rao, who is no more in this world, that he is the chap who gave me this quote. I have not done any great research in history. I read only one book for Mughal history, which is by 3 people, Sharma and somebody else, which again Rao told me. And there also, he predicted these 15 topics you should master. And these 3 topics may appear in a different format because they have appeared last year in this format. So I think in that 1 year time available, apart from brushing your minds with general knowledge, and then those days we used to have, I don't know what is the latest, whether you have a Prezi paper. So Rao used to tell me that you read the editorial and then bring the next day on an important subject, in 1/3 of that, a Prezi for me, and he would correct it for me. And he would say, you have missed this point, you have done this point. So what I learned from these kind of academies, which I'm sure they will be now telling you, is how in a short time try to assimilate what is important, and in your own way how to develop that, and
use their research capacities so that they summarize for you in bullet points what is required. With that, with the time constraint, I am sure you can compete. Because some who may not be getting the right advice may be concentrating. If I had been concentrating only on reading Lane Poole and Rayner and all those hundreds of books, I would have forgotten my chemistry and failed both in chemistry and history. So you have a very, because everybody has to race against time. Of course, nowadays the age limit has been relaxed. In our days, Mr. Chaturvedi will recall, used to make 2 attempts. And if you don't make it, you're finished. And your parents would say, my father used to tell me, Abhi masters in chemistry jarur kar liya, tumhe you are just a borderline case, you scored only 61%. तुम्हें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप भी नहीं मिलेगा, बस कई लोग पीएचडी कर चुके हैं और इसमें फेल हो जाएगा IAS में, you will become a lab assistant. It is still ringing in my ears. And he said the chap who's done PhD will become a professor, at least he'll be well paid, they will be taken well care of, they'll be respected. As a lab assistant, you will be giving nitric acid and sulfuric acid to your chaps who are doing MSc. That used to put further fear in my mind. So, I'm sure you are all undergoing these kind of pangs, these kind of tensions. So please insist on, because some booklets, this lady who invited me shared with me, yes, they are good. They have tried to summarize in articles. Read them in detail, then make summary of that also with the help of your professors. That should be in your fingertips. I could score about 70% in history, and I think British history scored even more because I had taken those bullet points, I knew them backwards, and I could, by reading the main kind of essays which Mr. Rao used to prepare for us, I could develop on those points. But if you ask me, I have read so much of history, no. And of course, chemistry, same, though Rao couldn't guide me on that, but again, I had done an analysis, what are the kind of subjects which keep on appearing again, and then try and concentrate on the same thing more and more. And try and not totally eliminate what has appeared last year, because the examiner will also know कि ये लास्ट ईयर अपियर हुआ करके पढ़ेगा नहीं तो इसको इसमें 2 घुसेट दो तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे. You can't say that, I didn't read this topic because it has appeared last year. So you need to understand all the basic important questions which has appeared in the last 15 years and use the limited time available. In your case, of course, the pressure of 2 attempts is not there. Maybe there are 5-6 attempts. The pressure of age is not there. But I'm sure other pressures which I underwent with my own parents and some of my relations telling my father, अरे भाई तुमने नौकरी पे भी नहीं भेजा, 1 साल घर पे बैठ के इसको लगा रहे हो, फिर ये तो केमिस्ट्री भी भूल जाएगा, अगर IAS में नहीं आएगा तो भगवान ही मालिक है. These things will happen with your parents also. Some of you might have come out of Delhi. I was luckily in Delhi. I used to be in Gold Market in one of the squares. My father had got a small 2-bedroom apartment. Those days squares were only single, quarter allotted. But then some of my colleagues used to come from Patna, some had come from Bengal. They were all under much greater pressure with Rao. Because if after all these efforts you don't make it, you will have difficulty in facing your own parents. And making it is not easy unless you have the knack of attacking the exam in a particular way. That I think these academies and the professors here, they know. And that is why I see so many students coming to the academy. The way people used to have a problem in getting admission in Rao's IAS study circle. But anyway, I was lucky, so he took me, because Rao would also, those days, estimate in his own mind that, whether this guy is capable of making it or not. I went through an interview even to get admission in Rao's IAS study circle.
And then when he knows that you're really sincere, you're doing it, he takes more interest. I'm sure that will be the case with every professor. That was the case even when I was doing MSc. If the professor feels that you are interested and you are very serious about it, he takes more interest. But otherwise, he is not competing for the IAS. Or he is not doing an MSc. My professors were all PhDs. I had Professor Sheshadri, who was the head of the department. So they were all highly qualified people, even in Delhi University. Even today, I'm sure they are all highly qualified people everywhere. Otherwise, they won't be big professors. And of course, it's an unfortunate situation which is very much improving in this country. Is that if you go to an America, which is now the other mecca for people who don't make it to the IAS, the most respected people are not bureaucrats or civil servants or the professors of various universities. That is why it is the greatest nation. And there the bureaucrats change every 5 years with the president. Of course, here the advantage is men may come and men may go, and you stay on forever for at least 37 years if you make it in your first attempt, or in whatever attempt you have made for a few number of lesser years. So please extract the best out of the faculty professors who are here. Please take their analytical experience, concentrate on those topics, and try to, with their help, get the bullet points, because what they have assimilated as experts in their field, you will not be, whatever may be your IQ, you will not be able to assimilate the same in 1 year's time or in 6 months' time. And you can't also give up the other subjects for which you're not taking coaching. So maybe the subject in which you've done your honors or MSc or whatever it is, you will say कि भाई चलो इतना तो मेरे को आता है. But उसमें भी you need to concentrate, because you are competing. I think in my days it used to be 1 lakh or more. Now it is, I think, 1 million. And then after that it gets reduced, and ultimately I think the plus minus same number of people get into all these services. It is not that nowadays, in my days it used to be 100 plus, maybe 100 plus 110, and maybe this time it may be 140, but it doesn't go to 1500 in the IAS. Or in my days it was 15 in the IFS, it may be 20 now, but it doesn't go to 150 in the IFS. So you need to make the best use of whatever time it is here, and there is no point in increasing your tension, because the tension you don't assimilate much. You need to be calm and then try to assimilate best you can, and then try your best. I'm sure you'll make it. First, you should have the confidence I'm going to make it. Then only you will make it. And then not only have the confidence that you will make it, then you should make attempts how to achieve what you are confident about. For that, you have little time available. I'm not saying time is available, but the time is limited. If I had done masters in chemistry, it took me 5 years to get that masters in chemistry with very able professors guiding me. You don't get that much 5 years to prepare for your other subjects. You're getting 1 year maximum. Maybe if your second attempt, 1 plus 1, 2 years. But still, you need to be focused. Take the experience of people who have wide knowledge. People who are a professor here or a professor in any of these academies have got their own achievements. And as I told you, to think that they are not IAS is not the end all in life. I've already told you, professors are the most respected in the most developed countries. Of course, India is now fast catching up. We have set up UGC. We are insisting that they should also be highly respected. Our present Prime Minister is giving most importance to scientists and professors and others. So it is good. It is required. Because if India is to become a really developed nation like America or Germany, we need to do this. A bureaucrat, again I will quote this thing. One of the chaps told me, you've taken Indian history, British history, Mughal history, Mr. Lakshminarayanan, you just scored 61% in chemistry. What makes you think you're fit for the IAS?
Those days, of course, I think nowadays, because I have also been once in 2-3 years sitting in the regular UPSC as an invitee. They do invite some retired bureaucrats. Then we are told that, you can't give anybody more than 75%. These restrictions were not there when I appeared in the interview. And they have also said that things like you should not go about how many attempts he has made, or you should not go about his academic performance or non-performance. But those restrictions were not there apparently, because I was asked by one of the chaps, Mr. Lakshminarayanan, you scored only 61% and you have taken Indian history, British history, Mughal history. That was before the answer I gave. What makes you think you are fit for the IAS? We require brilliant people. 61% is not brilliance. So I said, sir, if I can politely submit, again, what is required for the IAS is a determination to do good for the country and also sound common sense and the desire to put in hard work. But are you saying that we are not brilliant? I said, sir, I never said brilliance is a bar for civil service. You told me I'm not brilliant, I concede. But you told me what makes you think I'm fit. This is the reasons I fit. Mr. Jha said, yes, the very fine reply. On my face. Then the same chap asked me about this history. When I said it, after that, those days nowadays we are not allowed to give. I scored 220 out of 300. And maybe with my performance, I would have got rank 70 or 80. I scored rank 21. I was offered both the IFS and IAS. So what is required is your presence of mind, not getting bullied by, if there is a bully around in the interviewing side. But I told you nowadays, because I am also sometimes on the interviewing side, 2 years back I was there, we were given a briefing by the regular UPSC members that you can't bully. I had shared my experience with them also. You can't bully. You don't go into their past. You don't ask them which attempt is this. You just treat them, and if they're not comfortable in English, please make them comfortable in Hindi. This choice also we didn't have in those days. Nowadays the government wants more and more people from rural areas, from much poorer backgrounds, to get included in the civil service. Because at the end of the day, even though I've been a Stephanian, which is those days considered one of the best colleges and all that, and from a Delhi University, when I ultimately landed up as SDO in Ashok Nagar, I didn't even know where is Ashok Nagar. Then I realized it is in Madhya Pradesh. And then when I landed in Ashok Nagar, I found that I have to change a train from Bina to Ashok Nagar, which is a passenger train which takes 2 hours. There is not even a road connecting Ashok Nagar. Things have all much bright changed now. There are highways, there are roads, there are everything. But still, what I am trying to tell you is, don't have this feeling, I am not from the elite society of Delhi. I am not from the elitist background of Chennai or Delhi or Bombay or Calcutta. You may come from the poorest village of India. The intention of the government is to set that poorest chap from the village who is intelligent, who has a desire to serve the country, is selected. So that should be very clear in your mind that your background, your city has no meaning here. What is all going to be tested is your efforts, your power to assimilate in this short time the best you can with the help of analytical people who are experts in the subject, and put in your very best. Then there is something called destiny. Then that always takes shape. And then I have already told you this is not the end all in life. I have seen life elsewhere. I mean, I didn't make any money when I retired. I'm sure that would have been the case with Mr. Chaturvedi. My own saving a provident fund all put together was some 40 lakhs plus some gratuity or something which is now been increased. That was a day. And my wife was telling me, अरे some home ministry में secretary वगैरह रह चुके, अब pension भी उस दिन, because that time the secretary's pay was hardly 25,000 rupees. Now it is come to 2 lakhs. Now my pension is 5 times more than my last pay drawn as secretary. So my wife was telling me, with this, let us go back to Chennai
or to some other smaller place, even though your father has left this Vasant Vihar flat for you, I don't think we can maintain or even buy sabji with this. But still, anyway, I entered the corporate as chairman, and I made a lot of money. There is a lot of money in the corporate, but what you will get in the IAS, the exposure you get, the kind of people and the satisfaction you get that you are serving the poor masses of this country, the kind of people you come across. Now, I will end this with a small joke. I was newly married and my wife was from South. She didn't understand Hindi much, but she had picked up a little Hindi. So when I joined Ashok Nagar as an SDO, just on the fence in the morning people will assemble. And my wife would just come along to watch the fun. They said, Hajur, ye aap hi ke bacche hain, hame madad kariye. My wife told me, शादी मेरे से क्या, कितने लोगों के बच्चे हैं और क्या-क्या बच्चे हैं तुम्हारे. So I had to explain to her, this is the way these people want to sort of tell you to be sympathetic to what he is talking, what he has come with. Okay, so you'll undergo all these kind of experiences, but that man treats you as a father figure. He has a lot of hope in you. And I remember my first collector, who later on became Director General of Unit Home, Mr. Tandon. He kept me in his own house as a trainee in Gwalior. Later on, I became Collector Gwalior also. I was Collector Gwalior for 6 years. He told me, Mr. Lakshminarayanan, which I would like to tell you also, you should rule as an IAS officer by your intellectual superiority. Intellectual superiority primarily because you come through a tough competitive exam and certainly you have a certain bright level of IQ, and moral superiority. So don't please quote me or misquote me. Moral superiority means, he said, many people whom you will come across may be corrupt. But you rule by your moral superiority. You should set an example that I am a very upright chap. Then the trust will be there in you. The day you are not going to be upright, neither the other officers from PWD or the health department is going to care for you, because they say हम भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, फर्क क्या हमारे में? Things are getting diluted now. That is why I am giving you this advice even before you get in. But in my days, as a collector, even a police chap would be damn scared of you. Even the SP, because he knows that I have proved better than him in the IAS exam. He didn't make it to it. He made a different service. And the percentage of IAS people in my days, of honest people in the IAS was far superior to any other service. So we rule by moral superiority, intellectual superiority. And I can tell you, if you are a very upright officer, I am not from Madhya Pradesh. I am a Tamilian settled in Delhi. I got Madhya Pradesh because those days the rule was that if you are a lady or you are from the reservation quota, then you will get your home state on priority so that you can serve your people better. But sometimes, and 50% will be outsiders. So Tamil Nadu had only 6 people. So I had one lady, Yasmin Karim, and one chap, Natarajan Narayanan, who became Chief Secretary. He was ranked 11, so he got it. And the other 2 one was a lady, one was Nateshan, who was from the reserved category, he got it. So the rule was that if you don't make it to your state, your names are arranged in the alphabetical order, states are arranged in the alphabetical order. Lakshminarayanan came in front of him. I went to Madhya Pradesh. I never knew where is Madhya Pradesh that time. I knew it is the center of India. I landed up in Ashok Nagar. But I tell you that even though we have very poor impression about politicians and this, that, every politician respects an upright man and an honest man. I am not from Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is known for its caste politics of somebody being a Thakur, somebody being a Kurmi, somebody being something else. But I have been Principal Secretary to 2 Chief Ministers, Arjun Singh for 5 years, Digvijay Singh for 4 years. I am not a Thakur. I am not from Madhya Pradesh. And once when I asked them, sir, why did you pick me up? He says, तुम लोकल लफड़ों में नहीं पढ़ोगे, तुम्हें यहाँ के पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, और मेरे को एक ईमानदार आदमी साथ में चाहिए,
और मैं 10 चीज तुम्हें बताओगे, तुम मेरे को एडवाइस दोगे, 5 मैं मानूंगा, 2-3 में तेरे साथ बहस करूंगा कि यार नहीं इसलिए ऐसे करो, 2 चीज जो मेरे को करना पड़ेगा उसमें तू मत मेरे से बात किया कर. I have to run the state. My compulsions are different. I'll just end this talk with only one thing, and please see that the ways of governance are still same. Because being a Tamilian, there used to be those days some, high command and some MLA started demanding Pradesh Bachao, Arjun Hatao. Arjun Singh was the chief minister. So principals, I'd returned from London School of Economics after my master's in developmental administration and economics. So he straight away posted me as secretary to chief minister. So मेरे को मालूम नहीं था, 1 month after that this demand came. So he called me, and that time there used to be an IG intelligence, and he said, Lakshminarayan साहब और पाठक साहब, ये जो लोग मेरे खिलाफ चिल्ला रहे हैं, इन लोगों की कुंडली निकालिए. As a Tamil Brahmin, I thought kundli means my horoscope. Because my father used to show my kundli to people and see whether this girl will match with mine. So I just looked at Arjun Singh, sir, ये क्या कुंडली किसका मैं क्या निकालूंगा? He said, पाठक साहब आपको समझाएंगे. So I said, sir, ठीक है. So Mr. Pathak came to my room and said, sir, कुंडली मतलब इन सब के बारे में हमारे डॉसियर है. इसमें हम जानते हैं कौन किसके साथ क्या ठेका में इन्वॉल्व है, किसकी क्या अफेयर चल रही है, किसने क्या घपला किया है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये सब की हमारे पास है. अभी भी देश ऐसे ही चल रहा है, ये सब हमारे डोवाल साहब के पास है, सबके बारे में. और ये कुंडली है. तो मैंने कहा आप क्या करना है अपने को? तीसरे को आप, उन्होंने बता ही दिया सीएम साहब ने, आप दोनों सबको रात को बुला के कुंडली दिखाइए. एक एक करके पाठक साहब ने बुलाया, मैं साथ बैठा हुआ था, दिखाया. दूसरे दिन उन लोगों ने बोला जब तक सूरज चांद रहेगा अर्जुन अमर रहेगा. दिस इज हाउ द कंट्री इज. So please understand, administration is not all that rosy. There will be a lot of issues, but still it's the most challenging career. Certainly worth a try, but not the end of the story. If you're making, if not to the IAS, you're making to some other good service also, fine. Nowadays, Mr. Modi is trying to see that other services are also respected. They are also becoming secretaries, additional secretaries. Good. There are engineering services, because I am now chairman of 6 DRBs and I am in 2-3 arbitrations. There are people who are engineering chief from engineering services who are doing very well. I see a lot of good people there also. So also don't go under the impression that the world is over if you don't make it to IAS. The world is very wide. Thank you. Thank you, sir, for wonderful and insightful speech. Now, student, if you have any kind of question or queries for Dr. Subramanian Lakshminarayanan, sir, please raise your hands. Let me clarify those, because I was secretary for border management, police modernization, and interstate council. As interstate council, I made India a member of the Forum of Federations in Ottawa, because India is one of the biggest federations in a way, with a unitary bias. And there I presented a paper on the center-state relations here. So the University of Mexico honored me with an honorary doctorate degree. So though I put this doctor and all that, or many put, I am not a doctorate holder. Doctorate holders must be professors who have done a real research and does this. But anyway, my paper was about for 40 pages. It has been taken as a research paper by World Forum of Federations. And they gave me an honorary degree. So it's like the degree which Karunanidhi says or some other Lalu Prasad says, I am also a doctor. So please don't honor me as a doctor. Fine. I am a retired civil servant with a doctorate award, not earned. Thank you. Ashutosh, mic password. Yeah, you can ask me any question, Hindi, English. I am very proficient in Hindi, though I learned my Hindi in Mother. Yeah. Then
I gave judgment dignity also. Good morning, sir. Yes. So my question for you is, what are the qualities examiners look for in a candidate in UPSC interview, Number one, apart from Yeah. subject knowledge? One is your self-confidence. And don't give the same reply that now people also understand. Everybody will say, sir, I have come only to serve the rural masses, this, that. I mean, this standard reply which every academy will teach you. Modify it in your own way. So it gives me a lot of opportunities to serve the country and say that don't repeat. If everybody, 5 people repeat the same, 6th man will be asked which academy did you go for tuition. So be confident. Have the capacity to quote, which I told you, which I quoted. I'm a very frank-spoken chap throughout my life. I'm still claiming that I've never read Lane Poole. But I quoted Lane Poole, I got my marks. But I only remember Mr. Rao, who had summarized, and he told me this will be a useful quote for you. Okay? Sometimes, learning with such people, you also start writing. I had an essay paper where the topic was the world shall never be won. So Mr. Rao had told me, you should analyze it politically, world can never be won. I wrote one paragraph. Then economically it can't be won because the rich doesn't want to share the riches with the poor. Capitalist countries won't give away all the riches or technology to you easily. All that I wrote. But 2 days before, I'm from the 70 batch 69 exam. 2 days before, Neil Armstrong and Edwin had landed on the moon. So after arguing for 5 paragraphs in the essay paper, I wrote, still we need not despair. That was my own creation only. When Neil Armstrong and Edwin Aldrin saw the Mother Earth on the moon, they saw it as one world. I scored very high marks in the essay because the fellow who is correcting your paper is seeing your beginning, is seeing your analytical power and how you are ending it. So be precise in your reply. Be confident in what you are saying. And suppose, they will try to test you. So somebody asked me, can you read to 3 Greek historians and this, that, I said, I submitted to you. I've only taken Indian history, British history, Mughal history. I'm not very conversant with Greek history at all. Oh, that's good. That's all. So that is, you should spontaneously not say, sir, let me think about it. Even if I thought for, even till today, if I think about it, I don't know Greek history. So there is nothing which doesn't come to you spontaneously, it will not suddenly come to you. So if you are staggering for a minute, say, sir, can I think for a minute? But then don't keep on thinking, then you will be lost in your thoughts and nothing will happen in your race. Okay? So be confident, be sure of what you are talking, and then be ready to defend what you have said. That's all. Yeah, I also have a follow-up question for that. सर जैसे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज एंड अगर वो व्यूज पोलराइज्ड है राइट या लेफ्ट में, तो हाउ डू यू गिव अ न्यूट्रल आंसर टू दैट? या फिर डू यू हैव टू गिव अ न्यूट्रल आंसर और कैन यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज? Okay, let me now tell you just again, which is the truthful Mr. Chaturvedi will agree with me. We have all been district magistrates. So, in my time, Indira Gandhi came after emergency. The number of people present was only 10,000. I was collector Gwalior. I implemented emergency in Gwalior. And out of which 3,000 were MP SRTC drivers and conductors because I didn't know how to collect the crowd. तो मैंने इन्हीं लोगों को बोला, वहाँ के जनरल मैनेजर को, यार इन लोगों को बैठा लो. Okay? The Congress claimed number of people who attended was 75,000. The police claimed because they have to say they managed a big crowd 50,000. I knew it was hardly 10,000. उसमें 3,000 हमने ड्राइवर बिठाए थे.
So then my Tehsildar claimed 20,000. So when I had to write a report, I said, take a mean of all this. Yes, sir, these are log aaye the. To satisfy. So there is no truth in all these matters. There is a view which is left. If you ask me whether, if you are going to say something which the country is not very happy with, if you are going to express Maoist views and justify the urban Maoists, I'm sure you will fail. Notwithstanding, you may be from JNU, and notwithstanding some people saying tukde tukde honge, that will not be accepted. टुकड़े तो होने नहीं देंगे, तो टुकड़े टुकड़े होंगे, वहाँ चलाते रहो और गिरफ्तार होते रहो, फिर शायद और कोई पार्टी आपके लिए चलाने के लिए टिकट भी दे दे, फिर हार भी जाओ, ये सब तो होता रहेगा. IAS में नहीं आ सकते. You have to present yourself as a very balanced and a good person who is not an extremist in either way, who is thinking good for the nation, good for society, and good for the country. But if you are having extremist views that Maoism is good for the country, that's the only solution for the country, then it is better to become a Maoist and go to Bastar. And then get shot also if you are unlucky. But then saying, sir, yes, sir, Maoists should be tackled. I think the tribal should be properly educated. And I don't think I agree with the Maoist views, but then we should try to bring about development so that they are coming into the mainstream. The government is doing a lot for them also. I think, sir, this is the best way forward. They will say, आदमी थोड़ा जानता है क्या बोलना है. Okay? At the same time, if you say, नहीं sir, सब माइस को उड़ा देना चाहिए, then also you are not fit for a democracy. You are not working under President Ziaul Haq that you can shoot people you want. You are accountable. So you have to speak in a very balanced way by which the person who is interviewing you will understand that ये problem भी समझती है और बात जो कर रही है सही बात कर रही है, देश की हित की बात कर रही है. Fine? Any further doubts? No, sir. Thank you, sir. Okay, our next guest is Dr. Bijendra Jha, who will enlighten us on the topic, how can students build a strong academic foundation that align with their aspiration in public service. Dr. Bijendra Jha is distinguished faculty member at Plutus IAS and he holds a PhD in political science from the prestigious Jawaharlal Nehru and has a rich academic background. Additionally, he has a valuable experience as research associate at Brown University. Dr. Bijendra Jha has spent many years coaching students for the UPSC CSE student and has been instrumental in helping numerous aspirants. So let's give a warm round of applause for Dr. Jha. Thank you, Simran, and thank you, HinduZone, for calling me, to talk with students. Distinguished, respected speakers, my friends, and technical teams, and then students. The center of the entire talk is the student. And I feel I would not teach you polity today, right? Most of you are, being taught by me. And today, my topic had been given that charting the career path. So I'd like to talk about few things, right? And I'll take only few minutes, right? So that I'll give, the other speakers who have, traveled a long distance, so they will talk more and we can interact later on, right? So let me talk about, don't, bother about career. Let me tell you first things. The research, there is one research that 85% jobs that will come in 2031, that will be, and that will not carry the disciplines that are being taught to you now. The entire discipline will be obsolete altogether. Not entirely, but yes. If you look at engineers who done engineering, but later on they thought that we are less, they are chasing the new technology because technology is changing a lot. Right? So don't bother about the careers. Yes, few things must be clear to you that. First thing, few things I would not, right? I have just taken a point that first thing you should have clarity in your life when you are deciding about your career. And once you have clarity, then you must ask three basic questions. What to do?
I hope many of you have clear about what to do. How many of you have clear what to do in your life? Raise your hand. जिसने नहीं उठाया उसको पता नहीं है क्या करना है. I think most of you, right? Now, second things you have to do, why to do. This is a very, very important questions that you address first to your own self, right? For example, if someone is pursuing for UPSC, then you ask why I am going to this, right? Is it a job? Then there are lots of job. I have told you that, right? You'll have ample of job in the next few years. So don't, right? So first ask question why. And when you answer yourself, otherwise you interact with teachers, interact with the the professionals. When you satisfied, then ask how to do that. Right? What are the way that you can pursue? This is the third point that you should be clear. And once you clear, then your direction, your movement in right direction is very, very important. Because what happens sometimes in the lack of directions, your potential, your energy goes here and there, and that you should not do that, right? Secondly, science, you have to read polity, international relation, governance, law, many things that you have to learn. So first thing, you improve the skills, right? And when you improve the skills, it contributes to your self-development. That is very important, right? Your entire journey is very important. Your entire syllabus is very important. The question bank is very important, right? That is very important. And then you cherish your journey. Once you cherish your journey, the destiny will come to you. Let me tell you, this destiny will come to you. Don't worry about that. And if you look at it, every game is a risk. Every work has its own risk, right? When ISK has risk. Have you heard about that? Without risk, there is no ISK. So this is also kind of ISK, right? This is about, something that you have to talk about. And let me, read one small poem by Faz, right? And this Faz is very famous, right? Faz Ahmad Faz, अगर आपने नाम सुना होगा, right? सुनिए, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी महरूफ हुए, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आरे आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. Right? So risk बहुत है और बस, but you must be committed. Your commitment is very, very important. Let me tell you. And then if you look at, you must have flexibility. Let me tell you, after your entire journey, you'll have, it's, as the earlier guest said, you don't worry about, you set the target, hit the target, click it and get it into it, right? But sometimes you must have, the alternative, the plan B, plan C, plan D, right? Later on, I'll talk about someday. So you must be flexible. Don't be rigid in your life. Never be. Right? Rigid people, break up very early. So be flexible, be adaptable, and, look for your personal growth. That is very, very important. And this personal growth will come from the diversity of learning, right? When you read history, become historians. When you read polity, becomes a law student. When you read geography, become a geographer. When you read science, become a scientist. Behave like scientist, right? Right? Do some experiment, think along the line, right? And these few points is very important. Any career that you opt, anything, right? Any career you opt, any professions you choose, and keep it. If you enjoy your journey, I'm telling you, you will enjoy your destiny, right? So with this, I will end here, and thank you for HinduZone again for giving me opportunity. Thank you, sir, for your valuable insight. Now, I would like to
open the floor for the bright minds. If you have any kind of question for Dr. Jha sir, you can ask. Okay. Please. So, जी, गुड मॉर्निंग सर. good morning. सर अकॉर्डिंग टू यू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए फॉर एनी प्रिपरेशन के लिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना डेवोशन के साथ उसको टाइम देते हैं. अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे डेवोशन अच्छा है तो राइट. अब क्या होता है कि हम पढ़ते वक्त ही नहीं पढ़ते हैं. हम जब शौचालय में जाते हैं ना तो भी हम सोचते रहते हैं कि अच्छा आर्टिकल का वो क्या था, वो जजमेंट क्या था, वो चीज़ क्या थी. होता है ना सर वहाँ बैठ के सब कुछ याद आता है कि ये करना है. अच्छी बात है अगर आता है तो. और सोचिए कि फिर उसी मोड में बैठने का भी जब स्टडी करिए तो उसी भी मोड में रहिए राइट. तो ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि इसको 8 घंटे पढ़ना है. डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टीम इंडिविजुअल. इट वेरी बेसिकली राइट. देयर इज नो कांस्टेंट वन रूल. You have to choose and you have to make your own path and your own journey, right? You have to write your own history, यस सर. right? So how You to can- motivate throughout the year? Sorry? How to motivate throughout the year? Yeah, see, first thing, मैंने कहा कि clarity होना चाहिए. First thing, how many are clear why do you prepare UPSC? Can you speak why do you prepare for UPSC? Anyone? Yeah, from the last? Yes, yeah. So what is that unparalleled? If you look at ISRO scientists that is doing Chandrayaan, that is also unparalleled job. I Yeah, don't. just you have to just Yes, clarify. Yeah. what I meant was that you can work in technology, you can work while you're a DM, you can work in multiple economics, politics, and governance. Then environment. You have so much options and so much diversity. Yeah. Some people say that yes, consultancy also offers that type of diversity, Yeah, but I believe that is it is unparalleled in my opinion, of course. Let me ask one more response from anyone. Why do you prepare for UPSC? Anyone who can respond, yeah. Please give. Yeah. So Yes. I think UPSC, the position we get, the par we get is totally different. So people take you seriously when you are in that particular par. So you can contribute better towards the society rather than any other positions when you have. Like this is a dignified position where you can work for your country and contribute better towards it. So That's great. That's it. See, yeah, you are rightly pointed out. You both are rightly pointed. This is something which gives you leadership, right? Which gives something to show your integrity, right? Show your impartiality, to prove your leadership. Yeah, you can be, better for, you can be for better, but let me tell you, you can be for worse also. It depends on your attitude when you are at positions, basically. So yes, when you are clear that why you are doing it, and if you, yeah, Retd, I'm responding to, yeah. So if you are clear why you are doing it, then that will give you motivation, right? There are, as earlier sir said, there are many the socially disadvantaged group, right? Talk with them, interact with them, think about them, right? And think, accept why you are doing it. If you are clear on that, that will motivate you. Or of course, we are here to motivate you. Okay. Since we are a time bound, we may not be able to address all the questions. Okay. गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा क्वेश्चन सर IAS ऑफिसर सर सर पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाएगा मुझसे व्हाई यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, व्हाई यू वांट टू जॉइन IAS सर, तो मैं सर मेरा पर्टिकुलर रीज़न है सर, मैं एक माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, पर्टिकुलरली इस्लाम माइनॉरिटी. तो सर मेरा यही आंसर है, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ अपने समाज में अपने कम्युनिटी को, तो सर एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मतलब लोगों की सोच बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री है सर. मेरा ये आंसर रहेगा सर, मैं अपने कम्युनिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ.
मैं बायस नहीं रहूँगा, कोई भी ऐसे कोई बायसनेस नहीं है मेरे अंदर, बस एक अप्रोच है कि अपने कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर करूँ ताकि वो लोग भी समाज के आए। तो सर ये आंसर इसमें तो नहीं आएगा, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन में तो नहीं आएगा ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, मगर आपको बोलना ये जो चाहिए, जो आप बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, इधर थोड़ी the kind of education which people need to have वो कम है, तो I would like to help them. At the same time, serve all other communities also. You are an Indian Administrative Service Officer, not a Minority Services Community Officer. Okay? When you enter the IAS, you are from the Indian Administrative Service. India consists of minorities, it consists of other religions, it consists of Muslims, it consists of Christians, it consists of Sikhs, it consists of Jains, it consists of Hindus, it consists of everybody. And our constitution promises that all are equal. So you have to say that, if you say that I am just coming into the IAS to serve minority community, there is only one post in the IAS which is Minority Affairs Secretary. There is no other post like that all through in your career. So you need to serve the entire community. But yes, you say, sir, because I come from the minority community, I would like to pay some special attention among my community people to see that the awareness for having better education and the awareness that India offers the best of opportunities to rise. I would like to propagate that also. That you do, nobody is going to say. I have a chap who was my AC under training who later on became LG Delhi Najib Jung. So it's not that minority community people have not been allowed to rise. He was the Lieutenant Governor of Delhi. So, but you can't say that I want to join the IAS only to serve minority community. Yes, sir. That is not be accepted. Okay. While preparing, we get a gap year. Yeah, yes. Okay. Yeah, carry on. Yes, sir. So I was asking that sometimes while preparing, we get a gap year. And when we reach the interview stage, sometimes the interview board asks you, "Ki, what have you been doing for these many years?" And sometimes we do have an answer, sometimes we don't, because the answer is that we've been preparing and sometimes we've been stuck in the cycle. So I was just, what question was coming to my mind was, what should I say? Like, should I actually go and work in some NGO or show some of my work certificate if I have it? Or what should I do? I don't think normally we ask what are you doing in the gap and all that, but how big is the gap? So it's been 4 years. So what have we really doing in these 4 years? Sir, I've just been stuck in prelims and mains. Then I've been helping my family. Yeah, come again. I was saying that I've been stuck in prelims and mains, and then I have been helping a little bit my family in their family business. Say that, what is the shame in admitting, sir, I need to support my family members, so I was working in between. But because my ultimate aim is to come into the IAS, which is a very stiff competitive exam, I've been preparing for that also. Okay. And I said that will not go against you. I mean, after all, family is important, IAS is second importance. Yes. Okay. No, I was saying that as a work, I've been helping them out a little bit. Not as in supporting them. Yes, they are the ones who are supporting me. I'm the one who's actually, You can say what exactly you did. It's not going to be held against you. Okay. That was the thing that I You was. don't have to say I've been preparing for 4 years for the IAS. Nobody asks you how long. Practically speaking, the underlying thing is that you should not fluff at all. Okay. Admit things, honestly. Tell the truth. What is the issue? I told you in the beginning itself. It is not a crime in this country, but this country's own aim is to uplift people. That is what a developing country is. So it is not a crime if you are from a poor background. I told you in the beginning itself, it is not a crime if you are from a rural background. It is not a crime if your parents are poor. There are people who are fathers are unfortunately pulling rickshaws. People who are coming to the IAS. There is nothing like that now. Yes. It's a plus point if you are going to be from all these backgrounds. For my friend who said who wants to serve only minorities, it is not a crime if you are from minority community.
That's all. You just say that, sir, I want to serve the country. I want to be making this society more inclusive. I want to make this society that the poorer people get better opportunities. That is what this whole service is all about. Yes, it is. I told you that for doing 1/10 of the work which Mr. Chaturvedi will share with me, as a secretary, we all slog for 14 hours a day for some bloody 30,000 rupees salary. For sitting in one board meeting in all the companies which I am now chairman, I get 1 lakh of rupees. And then for chairing some committee meetings, I get 1 lakh of rupees. Now I used to not get 1 lakh of rupees for slogging 18 hours a day as a secretary in the Home Affairs. Okay. Okay? So money, if that is your aim, No, it's not. then it is better to do somewhere else. I know that, sir. Okay. It was never my. So the aim is to serve. Yes, at the same time, I don't think in present day atmosphere, government is taking good care of you. There are certain things which are not taxed. You have a right from the time I have been in SDO till I retired. I have travelled only in government vehicles. I bought my car after I retired. Okay? Yes, sir. And that too also some company has now given me a car as its chairman. So the point is, the government that I have been using, the government car is not taxed. But now if I am using a company car, it is taxed as a perk. Then invariably, though I am not saying it's a good system, but as a collector, as an SDO, there are people serving your house. They were serving my house even when I was secretary in the Ministry of Home Affairs. Some CRPF chap had deputed a cook, some BSF chap deputed a chap who used to take care of my other work of running around. So these perks are not taxed. These are all given. But don't come to the service looking forward to this. No, sure. When I went for my master's degree in London School of Economics, I washed utensils. I was before that collector Gwalior, where I had 20 servants. तो वहाँ जाके फिर मैं बर्तन धो रहा था और हमारी वाइफ कह रही थी कि कहाँ बंगला था और हमारे सर्वेंट क्वार्टर भी इससे बड़े थे और हम एक बेड सीटर में बैठे हुए थे. उसके लिए भी जो ब्रिटिश काउंसिल हमें तनख्वाह दे रहा था उसका 50% चले जाता था उसी में. एंड वी वर लिविंग ऑन ब्रेड एंड ऑरेंज जूस बीइंग वेजिटेरियंस. तो ये सब है, बट यू कांट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ बट there are unwritten perks which you are enjoying as a civil servant. The respect certainly very high. I would say undeserved, but still it is there. As I told you that in India, when you say I'm a retired IAS officer or even a serving IAS officer, people look up to you with awe. My daughter is in America. My son-in-law is the director of marketing for Microsoft. They care a damn about the IAS. And if I go to America and say I'm a retired civil servant, they say, what civil servant? Which civil servant? So even if you are serving the American bureaucracy as a deputy secretary or whatever it is, they are not going to care much for you. So it depends on what the society is all about. So what I am trying to say, I am not saying that what is happening in India is correct. I would prefer that we become like America. What did I say? They respect their professors. So the best professors are there in America. Even many people, maybe sons of many IAS children, my own daughter, she went to Cornell, my son-in-law is from Microsoft. So there he is studied in America after graduation here. So what I am trying to tell you is that we should bring up our society like that, where merit and where the educational academic background is respected. Not bureaucracy is respected. Bureaucracy is doing a routine job of trying to develop your country to those levels. Yes, it's a challenging job because it's a country of backward people. Some gentleman said, yes, there is a lot of issues. So we need to see that overcoming these issues, how are we going to make this one of the best countries in the world? That is what your Prime Minister is talking of, vision of 2030, $1 trillion, all this. How will it be achieved? Unless you educate your people. And somebody now said, my friend said that there are going to be so many job opportunities. It's a fact. It's a fact. Yes. I studied out of a school here in Reading Road, MEA Higher Secondary School.
okay, next to Hardcourt Butler. So it all consisted of all Tamil Brahms. So in my class of 40, 30 joined the IIT. One became Vice Chief of Army Staff. He joined the NDA after that. Only I became an IAS officer. So would you say that the other 30 are all useless guys? They passed the IIT. They are also equally brilliant guys. And some of them have done extremely well in America. They have done extremely well in IT companies. So just to feel that, that's why I said this is not the end all in life. IAS is not the end all in life, but now that you have chosen that it is going to be your life, I am trying to tell you that this is the best way to achieve what you are wanting is this. I just wanted to say that I'm happy with my choice, but I just wanted to know that if I reach the interview stage. He said it. Yes. Please tell the truth. Yes. Nothing. I told you nothing to feel ashamed. I will give you more marks if you say, sir, I'm from a very poor background. I'm from a rural background. But I'm not. I'm not telling you. Huh. But don't say I'm not from any of these backgrounds also. Just say the truth. That's all. If they ask you for the background, I've told you we have been told not to ask too much about the background either. Because the purpose of the government now or the purpose of the UPSC is to get people from all sections of society coming into with the best of talent into the service. That is why it's such a tough competition. Yes, sir. But then to think that this is an service where you can make money, don't come with such wrong ambitions at all. I'm not saying you are coming with such. That is not good for the country. If that is all is the ambition, it is better to become a thanedar. You will every day make so much of money. Why should you compete for the IAS exam? Just be a thanedar somewhere or be a road transport clerk. You will make more money. Much more money than the collector of the district. Yes, sir. Okay, so what I am trying to tell you is that look for developing your country. Looking for, you're going to contribute your little bit to make India a great nation. To make your brother Indians better Indians. Education-wise, their own knowledge-wise. That is why there are so many there is a skill development secretary now who's trying to impart skills to people who can't come out of IITs or something like that. So that everybody, as he said, have got an opportunity to earn and they live very happily. So if we are sitting in the interview, should that be our approach towards questions? If that this is something that motivates us, or this is something that how we look, if someone questions us about how will you approach this problem, so is that how we should see it? If your approach is going to be, sir, I'm coming here to make money, you will be failed then there. I'll give you a 0. I have been in regular UPSC interviews. If your approach is, sir, I'm coming here for power, I will give you 2 out of 10. Okay? If you're saying you're coming here to make money, I'll give you 0. And maybe that power I don't have, I will tell other members also, ऐसे लोगों को तो कभी अंदर भी घुसने मत दो. So it depends. So, but if you're saying, sir, I would like to help in my own humble way in the development of our country, in the developmental path of the country, to make our society an inclusive society, to help the poor of this country and to do development for this country, I would say this man is fit for the IAS. Okay, I hope all your doubts are clear now. Let's move ahead. Our next guest is someone with a wealth of experience in the world of civil service. Please join me in welcoming Mr. Prabhat Chandra Chaturvedi, who will be sharing his insight on the path to become a civil servant. Well, friends, is okay? Friends, my senior colleague Lakshminarayanan ji has given you a good background of the whole subject. So I will not repeat. I will focus myself on your preparations only. I would emphasize one point that Mr. Lakshminarayanan has mentioned, because you should be very clear about that and it is going to help you. You see, the approach of Government of India these days is to increase the catchment area for the civil services.
as he mentioned, during our time, the age was 21 to 24 with 2 attempts. For IPS, the minimum age was 20. And there were 3 different exams in the same package. For IPS, it was different. For central services, it was different. For IAS and IFS, it was different. That pattern is no more here. Because government wanted to change the whole system and the structure of examination so that more and more candidates could conveniently appear in the exam. The number of subjects that were available in those days, it has changed. The language allowed at that time was only English. I remember I wrote my exam in 74. In that year, the only option that was given to candidates that they could write essay in any language, in any of the scheduled languages. But now you can select any language for writing your exam also. So why I am telling you this? कोई भी स्टूडेंट जिसने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रॉपरली कंप्लीट किया है, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपरली, जिसने प्रॉपरली कंप्लीट किया है, he can succeed in this examination. It is not necessary that you should have been a topper in your school or college or boards. If you have completed your studies properly, you can certainly succeed in the examination with proper coaching, direction, guidance. Now, the dates have been announced. You all know about the dates for the next year. And I am presuming that out of this group, there are some who are appearing for the first time. There are some who may be taking their second attempt or third attempt or fourth attempt. Now, when should you start preparing for the civil services? After graduation. That is the right time to start preparing for the CSE. I am not saying that you will not do your post-graduation, but one must start preparing for the civil services as soon as you complete your graduation. Now, you have to first clear the preliminary examination. Now, preliminary examination, you have to be very careful. Because if you analyze the data that is now available in abundance of the candidates who appear in the civil services examination, you will find some toppers who have just made the prelims with a few marks. They could have missed the main examination. So prelim is very, very important because the competition is the maximum there. I am giving you some data about which you must be already aware. जैसा बताया गया, करीब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, रफली 5 लाख लोग बैठते हैं. आई एम गिविंग यू राउंड फिगर्स. 10,000 के करीब जो प्रीलिम्स में लोग आते हैं. इट इज़ 11 to 12 times, but I am giving you a round figure. और 10,000 में से फाइनली 1,000 लोग सेलेक्ट होते. So the competition is very tough. This is the toughest competition of the world. And one of the top 5 toughest examination of the world. So these are the ground realities. These figures are not to scare anybody, but you must understand what you are facing, what you are going to face. The other thing is, you do not know your competitors. आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको मालूम है आपके साथ कौन बच्चे हैं, कौन अच्छा है, कौन कम. Here you just don't know. The entire country is competing. So preparing for preliminary examination is very, very important. Now your institute will guide you what books you have to read. What I would suggest is, in addition to whatever you are doing, you must read NCERT books. Must. From 9th to 12th. This should be in addition to whatever is being told to you. Another thing,
In addition to NCERT books, I am talking of prelims only at the moment. You must read newspapers. There are publications of National Book Trust. There are publications of the publication division of Ministry of Information and Broadcasting on various subjects. I think this information can be given by your institute where you are going for coaching. These you must read. Prelims में क्या है कि उन्होंने टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं कि हम इनमें से पूछेंगे. प्रॉब्लम क्या है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको नहीं मालूम. एंड दिस चेंजेस एवरी ईयर. उन टॉपिक्स में से किस टॉपिक्स में से 200 में से 20 क्वेश्चन आएंगे, किस में 5 आएंगे, ये यू डोंट नो. So your knowledge about all the topics has to be good. And that is why I am saying, in addition to whatever books are suggested, whatever papers, tutorial papers are given to you, you must read NCERT books. Why I am saying this? Because the examiners who set these papers, they use those books. So this is very important about the prelims. Now, what should you do about mains? You have to start your preparation for prelims and mains right from day one. ये आप नहीं कर सकते कि हम prelims में पास हो जाएंगे तब हम मेंस की तैयारी करेंगे. No. As I said, the competition is extensive. एक एक नंबर से पोजीशंस मिस होती हैं और एक एक नंबर में सैकड़ों पोजीशंस हो सकती हैं. इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. और मेंस में ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना. अब बहुत सारे लक्ष्मीनारायण जी ने बात बताई, हम लोगों के टाइम में पैटर्न फर्क था. साइंस स्टूडेंट वुड हैव टेकन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, नॉट ए सब्जेक्ट जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बट नाउ द सिस्टम इज डिफरेंट. यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन पेपर, वन सब्जेक्ट. इन विच एवर सब्जेक्ट you are comfortable. It should normally be the subject in which you have done your graduation or post-graduation, which you should select as optional. ऑप्शनल की तैयारी भी आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी और उस तैयारी का फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में भी होता है. बिकॉज देर आर मैनी सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देर आर मैनी सब्जेक्ट्स जो कि कवर करते हैं उन टॉपिक्स को भी जो प्रीलिम्स में आते हैं. तो आपके ऑप्शनल की तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए. और इंटरव्यू में इसलिए नहीं टच करूँगा क्योंकि दैट इज़ नॉट द स्टेज टुडे, दैट स्टेज विल कम लेटर. एंड देन सिंस वी हैव बीन सिटिंग इन द यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड्स, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी विल गिव यू गाइडेंस एंड टिप्स अबाउट दैट. तो ये मैंने आपसे बताया कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपकी तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए. नाउ वेदर वन शुड जॉइन कोचिंग और नॉट, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू मस्ट जॉइन कोचिंग. कोचिंग से क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी नॉलेज है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए, कैसे फोकस किया जाए, उससे ये फ़ायदा होता है. इसलिए कोचिंग का हमेशा आपको फ़ायदा होगा. लक्ष्मीनारायण साहब ने बताया राउत स्टडी सर्किल के बारे में. आई हैड ऑल्सो जॉइन राउत स्टडी सर्किल ओनली फॉर इंटरव्यू पर्पस, नॉट फॉर मनी. अब मेंस की तैयारी में जो एक खास पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट कोर्स इज़ वेरी ह्यूज. यू सी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो समुद्र है एकदम. You think of any topic, any subject, and you will find it somewhere. Either in prelims, or in essay, or in general studies, जो 4 पेपर्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो टॉपिक मिलेगा ज़रूर. There is no topic which is not covered there in some or the other way. इसलिए इस समय आपको फोकस करना चाहिए अपने मेंस पे और प्रीलिम्स पे.
कौन से पेपर्स देखे जाएं, आई वुड एडवाइज कि पिछले 10 साल के पेपर्स आप ज़रूर देखिए। स्ट्रक्चर में चेंज हुआ था 2011 में, मेजर चेंज। देन अगेन इन 2015 जब आपका जो पहले 2 कंपलसरी माने जाते थे प्रीलिम्स में, उसमें से एक हटाया गया। तो आपकी जो तैयारी है वो मेंस और ऑप्शनल्स की शुरू हो जानी चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अप टू इंडिविजुअल। वो सब इंडिविजुअल के ऊपर। सब लोग आपको बताते रहेंगे टेंशन में मत रहिए, स्ट्रेस में नहीं रहिए। वी आर ऑल ह्यूमन, यू विल ऑलवेज बी इन स्ट्रेस। कितना कम कर सकते हैं आप, ये डिपेंड करेगा कितनी आपने तैयारी अच्छी की। एक डिबेट बहुत चलता है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए कि नहीं। When I was in your position, I hated reading newspapers, but I could afford it. उस समय पैटर्न फर्क था, उस समय एग्जामिनेशन का पैटर्न फर्क था। नाउ यू कैनॉट अफोर्ड इट, यू हैव टू। आपको अच्छा लगे या न लगे, आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, 3 नेशनल पेपर्स, एक इकोनॉमिक पेपर, मैं बताऊंगा क्यों पढ़ने, एक इकोनॉमिक पेपर, एक इंग्लिश, नेशनल पेपर्स की बात कर रहा हूँ, नेशनल डेलीज, और एक हिंदी। नेशनल डेलीज में हिंदी में और अंग्रेजी के अखबारों में फ़र्क है। और इन पेपर्स में आपको ये नहीं पढ़ना है कि आज उसकी वहाँ हत्या हो गई, आज उसके साथ ये हो गया। नो, आप कर्सरली उसमें देखिए। वाई दिस पेपर्स? इन पेपर्स में करंट अफेयर्स के अलावा इन पेपर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के एक्शन प्लान्स, गवर्नमेंट क्या सोच रही है फॉरेन। आजकल फॉर एग्जांपल वेरी कंट्रोवर्शियल इशू अबाउट द इजरायली एंड फिलिस्तीनी। कई लोग कह रहे हैं साहब आपने पॉलिसी चेंज कर दी, आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीनियंस को नहीं कर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप पेपर्स में जाएंगे इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जहन में रहेंगी। और करंट अफेयर, जैसा मैंने कहा, आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में किससे तक यू नेवर नो अबाउट द यूपीएससी। 30 सवाल आ गए मान लीजिए, 200 में से 10 भी आ सकते हैं, यू डोंट नो। सो यू कैनॉट टेक दिस रिस्क। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। इट मे नॉट बी टफ, बट द कॉम्पिटिशन इज द मैक्सिमम। You may do well, but you may not succeed because of the competition. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर्स आप पढ़ें। जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र में न्यूज़पेपर मुझसे कोई कहता है, मैं कहता मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना। इट्स वेरी बोरिंग थिंग। सो आपको न्यूज़पेपर्स में से जो पॉलिसीज़ हैं, न्यूज़पेपर में एक चीज़ ज़रूर पढ़िए, बिकॉज दैट फोकसेज ऑन द क्रीम ऑफ द इशूज़ देयर, दैट इज़ द एडिटोरियल। वो ज़रूर पढ़िए। तो ये न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना और प्रीलिम्स की तैयारी करना, ये मैं समझता हूँ कि इस समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू शुड फोकस योर टाइम ऑन दिस, इंक्लूडिंग द मेंस। आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे, और प्रीलिम का इम्तहान देने के बाद आप प्रीलिम्स भूल जाइए। सही जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए। You forget about prelims. Concentrate on mains, presuming that yes, you will clear. So these are some of the tips that I wanted to give you, because अभी और भी speakers हैं, तो मैं वो नहीं करूँगा, but you are all welcome to contact me. I am stationed in Delhi. The Plutus can give you my details. My office is in Vasant Vihar. So anybody is welcome there to come, discuss with me. Take whatever guidance want, but through Plutus. Don't bypass. Don't come to me directly. So these were some of the issues which I just wanted to raise. I didn't want to. There are many points, but we'll discuss. Thank you, sir, for sharing such invaluable insight with us today.
Now, I'd like to turn to our audience. If you have any kind of question with sir, one by one, please. Mic. So, okay. I don't know. Question. Who raised that hand? Who raised hand? Good afternoon to you all, sirs. My name is Samartha. Firstly, I would like to thank you all for serving our nation for so many years. My question is not regarding any examinations, but as an aspirant, I am curious to know any of your toughest or critical situation you dealt with when you were serving for this nation, if you could share with us. Oh, during examination? Not during examinations. Oh, during my service career? Yes, So sir. many. But that will be some other time because there is Okay, a full okay, group. sir. There are so many in service. You see, I am talking of, purposely I am talking of civil services examination. I am not talking of IAS. And I would advise you, you focus on civil services examination. Forget about the rank. Once you clear the prelims, then I will tell you what are the parameters which are going to be important for ranks. But you think about civil service examination. CSE is not only IAS. There are so many central services which are very good. Of course, no service in the world can match IAS. That is there. But you can separately contact me because this may not be of Okay, sir. any help to others. Thank you, sir. I touch few of these that are taken. Good afternoon, sir. I am Tanishq Singh. Sir, my question is how should I do to increase capacity of my brain? Because studying for long hours, sometimes it feels like nothing I am Very simple. and like Very simple. कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 8 to 9 hours. 5-6 घंटे पढ़िए बस. So it is not possible to cover all the syllabus. I am telling you, this is the mistake that students do. This is the mistake the students do. What happens is, आप 4 घंटे पढ़े हैं, आपको सब चीज़ पढ़ ली, और अगर आप 8 घंटे पढ़ी तो जो 4 घंटे आपने पढ़ा है ना, वो भी सब दिमाग से निकल जाए. केवल उतना पढ़िए जिसमें आप कंफर्टेबल हों. कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा पढ़ने की. फोकस्ड पढ़ाई होनी चाहिए. कोई टॉपिक जो उसके सिलेबस में, देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई हैं यूपीएससी में, आपने देखा हो. अब यूपीएससी ने इस साल से एक और बहुत अच्छी चीज़ की है जो आप लोगों को शायद पता भी होगी, कि जो लोग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं लेकिन सक्सीड नहीं कर पाते, उसमें उनकी परमिशन लेने के बाद, आपकी परमिशन लेने के बाद वो भी पब्लिश कर दी जाएगी. That list will be made public. Why? Because if any private sector organization wants to pick up those people, they can do it. So the government's approach is very, very proactive, very proactive. They want more and more people from rural background, semi-urban, urban backgrounds. और इसीलिए आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर बदला है पेपर्स का, ये इसीलिए बदला हुआ है. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हो वही उन पेपर्स को सॉल्व कर सकता. एनीबडी हु हैज़, जिसने सबर्बन डिग्री कॉलेज में भी एजुकेशन कंप्लीट की है प्रॉपरली, ही कैन राइट दोस, ही कैन राइट द एग्जाम एंड सक्सीड. तो ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. उतना पढ़िए जितने में आपको अच्छा लगता. So in an interview, what features do interviewers find in that I am aspirant? not going to talk about interview because this is not the stage. देखिए ये आप भटक रही हैं. देखिए फिर you have to focus on prelims, only prelims. आपके पास 6 महीने हैं.
Dates are already there. I think 26th May and then 20th September is your mains. आपका 26 मई को अगर एग्जाम है तो 15 जून के आसपास आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा. Focus on prelims, please. Okay. Sir, good morning, sir. My name is Ujjwal Mishra. My question was how to deal with case studies in ethics paper. How to deal with case studies in ethics paper. Case studies. That is. Yeah. That topic will be dealt with by this thing. Thank you. About the case study. We will take your question in end of the session. Okay, due to lack of the time. How many times you have faced the issue of lack of time when preparing for exam? We all have been there, but now we have an expert to address this challenge and provide us with valuable tips on time management and goal setting. Dr. Jitendra Kumar, who is one of the top faculty member at Plutus IAS and well-known figure in the UPSC CSE exam preparation community. He has played a crucial role in helping numerous. Thank you, HinduZone and Plutus IAS, to providing status here to talk about it. Today we have distinguished guests and retired IAS officers. I would like to focus on your goal. You have already set up your mind that you are going for civil service examination, all right. So when I was preparing for my master in Delhi University, there is a very well-known professor, history professor in Delhi University. His name is Professor Anirudh Deshpande, and he had also been a member in the UPSC panel, okay. So he said, told me an example of an IAS officer who was in Northeast India. And he was an IAS officer and he faced a challenge. He was attacked by Maoists there at, and he saw that he will be killed next day. So he left that state and came to Delhi. He met very famous historian of that time, Professor Sumit Sarkar. And then he resigned from IAS. And then he joined academia. He worked as a professor of history in Jamia Millia Islamia, and he became a very famous professor. His name is Professor Amya P. Sen. Okay. So I inspired from this incident and I decided that I will not choose for this service, and later on I joined for PhD. I went for academy. I taught in Delhi University for 2 years. I have been assistant professor in Delhi University. There I also saw that the problems have been there in academia also. The problems are there in civil service also, that these the service servants have been faced. Amya P. Sen had also faced the problem, and then later he became the historian. But what we see, the problems are also there in academia also. The same corruption, same things. But the point is that, as Sir was telling about you, that we should have a moral superiority in our mind. That wherever we are serving, whether we are in UPSC, where we are IAS, IPS, or whether we are professors, we should have morality in our job. We should work properly. So we should give attention on that. Other point is about time management. Okay, the student asked that she did for 9 hours. The point is that how much hour we should keep for a study. Okay, one day one of the student of M24 batch came to Bijendra sir, asking that, sir, I get tired. Okay, and he was asking that how much hours you are doing. So the first of point that we are facing the problem in our study when we do not focus on our hobby. So every day we should focus 2 to 3 hours on our hobbies. Whatever is your hobby, badminton, football, playing, jogging, gym, anything. Apart from this time, 2 hours of your hobby, we should also focus on the sleeping pattern. That every student should sleep at least 6 to 8 hours. If you will not sleep properly, you are not going to remember and catch anything, whatever you have read today, yesterday, or the last week. Okay, so we should focus on our sleep and hobby. This is what. Other point is that we should learn our time management. It is you who have to decide how much you should read. Nobody, no institute can tell you that how much you should study. The point is that one person can understand the syllabus in 5 hours. The same syllabus can be understood by other person maybe in 15 hours. So it all depends on your capacity, that how are you going to approach it. So first of all, how should we divide our time? We have 24 hours. So first of all, take 1 year as a time. That we have 1 year to start preparation and to finalize the preparation. 1 year is a main time. But not for those who are appearing for this 2024 civil service examination. We have been preparing for the last year only. Okay. So let us say 1 year time. So we should divide all the syllabus into 1 year.
So suppose we have GS paper that is of 1000 marks. We have optional paper that is of 500 marks. 2 papers are there. So we should divide time according to this. Suppose if we read 8 hours a day, we should denote especially 3 hours at least for our optional and then 5 hours for our GS paper examination. But so in 1 year we have to divide our syllabus. Then the point will come in a week. Do not read all the week. In the last day, that is Saturday or weekdays or the Sunday or any day, you take the time for revision only. So whatever you read for the 5 days in 1 week, for 1 day you do the revision. Then in the 1 month, you keep 1 day or 2 days, the whole day, it should be for the revision purpose only, so that whatever you are reading throughout the month, you will remember these points. This is one. So what will come? So in that 24 hour of a day, we should keep at least 8 hours for sleep from this time. If you will not sleep properly, you are not going to manage anything. The sleep is one important point. Proper sleep you should have. Everyone has a smartwatch these days. You map your pattern that how are you sleeping. You can also map your score that कैसे sleep कर रहे हैं आप. The second point, hobby. If you will concentrate on your hobby, painting, anything, cycling, anything. So if you would properly focus on your hobby, you are going to remember the things you are going to study. So 8 hours for study, 8 hours for sleep. Then you have 2 hours for your hobby. Now the time will be for your friends, the movie, Insta reels and all. Do whatever you want. So do not be away from anything that you love in your life. So do whatever. Now you focus 8 hours for your preparations and study. 8 to 10 hours will be the maximum time if you utilize it. Suppose if you are doing a coaching institute at Plutus, you are being taught 3 classes, let's say. Hai na? So you have been here given 3 classes that will be of 4 and 4.5 hours. So now you can take 3 hours for the self-revision. Whatever is taught at the institute, you should go home and then you should read that, you should revise that, okay? And again, in the last week at the Plutus IAS, we offer a class test. So through class test, we also do revision. So what is the time management? There's a very famous scholar, Parkinson's, his theory is a very important that whatever time is given to us, suppose we have been given a target of 2 weeks, that we have to complete 2 chapters of Indian history. Let us say that Mughal India is a topic that we have to finish within 2 weeks, and after 2 weeks there will be a class test. If we will think that we have 2 weeks, that is a 15 days time, 14 to 15 days time हमारे पास है. So if you think that we have 15 days according to Parkinson theory, you will not be able to complete that syllabus. You just think that I have 4 days. But the time is 15 days. So you have to finish the syllabus within 4 days and then you revise on that so that you can work on that properly. So we should focus on the time management. So in this, what we see, everyone should focus on time. Other point is that should we read 3 subjects in a day? Like in coaching institutes, we are offered 3 batches definitely. One is for polity, other for history, other for geography. So that it is a coaching institute, it is a compulsion of coaching institute to provide 2 to 3 classes. But the point is that whether you should read at home 3 papers at a time, it all depends on individual. You can do one thing, you can complete 1 portion of polity in 1 day. Other day you can read economics, other day you can read geography, or you can divide your time according to hours, that I will read 1.5 hours for geography, 1.5 hours for polity. So this all depends on you. But the most important point is that the time management all depends on you. If you can't manage your time now, why Indian government should give you to manage district? Okay. So time management should not be a matter of motivational thing. It should be a thing of that depends on you only, that you are here qualified to be an administrative officer of India, to be an IAS officer, IPS officer of India, IFS officer of India. So the time management should be managed by individual person. But the most important key point that we should focus on it is that sleep, hobby, and whatever study, it should be revised within a week, then within a month. Apart from all these things, suppose you are going to appear in 2025. Before 5 months of the examination, 25 की बात हो रही है, 24 भी हम कर सकते, 25. So before 5 months, we should complete all the syllabus. After that, we should focus on the revision only.
The revision will make you there that how to solve the questions, and revision should be done through previous year questions papers and the model answer set by the institutes or test series. Okay, so these things are important. So lastly, I will not take more time. We have expert members who will be talking on the different aspects of civil service examination. The last thing I am repeating from my this statement is that you should manage your time according to your need. You should not worry that we are unable to manage our time. It is, you should not worry, because if you will not be able to manage your time, why do you think that you are fit for the civil service? Okay, thank you so much. Thank you, sir, for sharing your valuable words. Now, I'd like to ask student if you have any kind of question for sir. Yeah, okay. We all possess unique skill and ability, but often we struggle to harness and integrate them into our career. Many of us find ourselves following the path of those around us, pursuing dreams that don't truly align with our passion. Our next guest, Dr. Hardeep Singh, a distinguished ex-IAS officer, will provide us with valuable insight on how to mold a successful career from one passion, just as he has. Dr. Hardeep Singh has dedicated over 30 years of his life in experience as a IAS officer, making significant contribution to our nation. He is a shining example of how one can translate their passion into fulfilling an impactful career. So let's give a warm round of applause. Welcome to Dr. Hardeep. Thank you so much. Respected and distinguished guest speakers, the senior colleagues from my cadre, Sri Radha Dr. Lakshminarayanan, Sri Chaturvedi ji, the professors of the Lotus Academy, organizers and the supporting team, dear students. मैं हरदीप सिंह, sometimes I say I am Dr. Hardeep Singh. I did my PhD in agriculture. In your age, somewhere around 22 or so, I was a banker. Immediately after doing my MSc agriculture, I joined bank as probation officer in the year 1985. Then I submitted my dissertation. Once I got the call from the bank, hurriedly I submitted it. Then in service I did my PhD. Rather, I completed the PhD. The research which I did years back, in the last year of my MSc, I started the work for the PhD. I submitted the dissertation later for PhD as well. Then I shifted to the state civil services. In the meantime, I appeared 2 times in the UPSC interview. First time I missed it. Second time I was in the railway traffic. So I preferred to go for the state services because I wanted to remain within my state, as the young man said, that he has a desire and a, some burning spirit to work for the community. I had a burning spirit to work for the state. So I preferred to be a PCS officer, though I was knowing that by opting like this, I am opting for a, juniority and missing the seniority of 10 to 15 years. So I have worked in more than one district as a collector. I had been a district magistrate of Gurugram, the nearby district of Yovas. I had worked as a director and director general in many of the departments. I have worked as a special secretary and secretary in many of the departments in the state government. But I never opted for the central government deputation. Because generally officers who are elevated to IAS from the state services,
they have, many other compulsions to continue in the state itself. So the government, I got a pressure from the government not to get relieved of. The other compulsion was, had I opted for the central deputation, I would have retired as a joint secretary only. So I prefer to remain in the state itself. The last time I was a Director General Agriculture and Secretary Agriculture. I retired a few months back. Then I opted for the re-employment. So now I'm looking after the training portion of the government. I'm a Director General Training in Agriculture Department these days. So that was all about my career, just to help you to understand the journey of a civil servant. Those who are not appearing this year and those who have not joined any academy, they are just attending the seminar, to help those students, I'll divide my talk in 3 portions. The one which we have just touched now, to tell my journey through those, the discussion we had, the question and answer. Then the paper which I have been, given, the paper number 4 in the mains, and the case studies definitely, to reply to the question and the query which was raised by one of the, audiences. Very lately, just now, we were discussing in the time management, कितना पढ़े. मैं कभी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा. I used to keep, some account of it on a piece of paper, date-wise. आज कितने पढ़े, मैं उसको लिखता था. It was a type of the logbook. More important is whether you are enjoying it or not. If you are not enjoying the studies, it is better you opt for some other career. It's a long way of a year or two you have to prepare. Syllabus is so wide. And these days, they have made a change in the syllabus. You have to attempt all the questions. It was not so earlier as during our days. Meaning thereby, you must keep notes for it. मेरा आइडिया है कि आपके नोट्स किसी भी सब्जेक्ट पे 200 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये मेंस के टाइम. इससे ज़्यादा आप यू कैन नॉट रिटेन. माफ़ करना, दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग. यू मे एग्री, यू मे नॉट. I was very fond of jogging, and I had been a member of the university and the college team, middle distance and the long distance. So during my preparation in the hostel, every day I used to jog. मुझे तो सुबह भी 10 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री करना था और शाम को भी ग्राउंड पे काम करना होता था. मेरे लिए कोई स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी. मेरे लिए कोई टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं थी. टाइम था ही नहीं. देयर वाज नो हॉबी. व्हेन आई वाज आस्क्ड एनी हॉबी, नो स्पेसिफिक हॉबी. फॉर ए साइंस स्टूडेंट, हार्डली we have a time to go for the hobby, but if you have a time, you must opt for some hobby. As told by Mr. Chaturvedi, that now government is changing the thought process, and the candidates who have not qualified finally, and out of the gamut of the unsuccessful candidates, few jobs will be offered. During our days also, but so silent. Many of us, they got call from the raw. In the first interview, I just missed it. So 3-4 in our hostel, they got a call. And many of them, they got the job. So it was a silent type of the understanding at that time. But now the policy is becoming open. The one question came from that side, the rear end of the last line. How to remain motivated throughout the year? The reply was quite apt. The reason for which you want to join the civil services is enough to keep you motivated. I like to add one thing.
अच्छा खाओ, अच्छा कसरत भी करो, ऑल्टरनेट डेज पे जिम विम भी जाओ, नहीं तो फिर डम्बल करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो. इफ यू हैव ए गुड हेल्थ, नींद अच्छा आएगा, रिटेंशन अच्छा होगा, थ्रू आउट मोटिवेटेड रहेंगे. इफ यू फॉल सिक, तो आपका महीना गया, 15 दिन गया. आज का इन्फेक्शन जो है वो गले का भी इन्फेक्शन हुआ तो विल टेक वन वीक एटलीस्ट. सो आई एड दिस कि मोटिवेटेड रहने के लिए जरूरी है कि आप पूरा साल हेल्दी रहो, देन ओनली यू कैन रीड थ्रू आउट. वन स्पेसिफिक, very specifically I want to share with you in an indirect way. I had been secretary of one of the Public Service Commission for 5 years. So I know how to get the question paper set, how to handle the examiners, and what is the need of the examiner and what is need of the, question paper. When I consulted UPSC to know their style, secretary, and then I met the joint secretary level officer, they smiled over me, आप अपना राज बताएंगे. They only handed over the papers of the previous years. This is 2000 का बात है, 2001 का प्रेप्स. पुराना पेपर दे दिया हमें 3 साल के मेंस के, और कुछ सब्जेक्ट्स थे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के परी के भी दे दिए. सो ड्यूरिंग our days, and me, what I used to do as a secretary when I was in charge of this confidential work for the state civil services. मार्केट में जैसे अभी चतुर्वेदी साहब ने कहा कि आप मार्केट की बेसिक किताबें पढ़ें, NCERT, तो हम मार्केट से whatever is available in दिल्ली एंड चंडीगढ़, we were knowing कि स्टूडेंट ने इतना ही पढ़ना है, तो हम एग्जामिनर को एक कार्टन किताब का लेके देते थे कि साहब इससे बाहर ना जाना, ये सिलेबस है. इंक्लूडिंग यूपीएससी पेपर सेटर के पास 3 साल का पेपर जाता है. ये मैं प्री की बात नहीं कर रहा, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ. प्री के लिए आइटम्स होते हैं, आज भी वही स्टाइल है, पहले भी वही था, हमारे टाइम में भी वही था. हमें कैसे पता कि हमारे टाइम में वही था? वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अभी आएंगे मेरे बाद में, ही वॉज सीनियर टू मी, इनके गाइड के पास पेपर बनने के लिए आया. एनी हाउ, किसी तरह से व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, मुझे जीके के लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ आइटम बनाने के लिए कहा गया. आई वॉज नॉट नोइंग किसके लिए बन रहे हैं, और मैं यूपीएससी के लिए सीरियस भी नहीं था. ड्यूरिंग दोज डेज ये प्रिलिमिनरी के आइटम्स बनाना एक नई बात होती थी, वरना तो वो यस नो ट्रू फॉल्स तक ही सीमित थे. स्टाइल से आइटम को बनाने का काम हमने तभी देखा था. टू माई सरप्राइज, व्हेन वी अपीयर्ड लेटर ऑन आफ्टर 4-5 years, वी फाउंड मोर और लेस सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस देयर, मीनिंग देयर बाय द कमीशन, आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम. वो एक क्वेश्चन बैंक रखता है, उस क्वेश्चन बैंक को एग्जामिनर जो है वो एक किसी प्रीवियस रेशो के हिसाब से कितना किसको वेट देना है, और हर साल कभी एक जैसा नहीं होता. फिर एक 100, 120, 150 जो भी किसी की डिमांड होती है उसमें से बनाया जाता है, और राउंड द ईयर उस बैंक में क्वेश्चन डलते रहते हैं. ये था आपका परी का. मेंस में 3 साल के क्वेश्चन पेपर, ये पुराना स्टाइल है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही करते थे. माई गाइड, माई टीचर्स, द सीनियर्स, वो भी ऐसे ही करते थे. पुरानी पेपर लिए और पेपर भेज के एग्जामिनर को भेज दिया. तो द एडवाइस विच वॉज गिवन टू यू जस्ट नाउ, दैट मस्ट रीड द लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर, इज द राइट एडवाइस. यू मस्ट डू योर रिसर्च. सी, the staff and the faculty in the coaching center is always to guide you truly, honestly, and
they are happy that you are selected more than the happiness. But it is your duty to do research. Have an analysis of the old papers, rather I should say 2010 के बाद का जितना भी पेपर है, आप मेंस का और परी का, क्योंकि स्टाइल बदल गया ना 10 years बैक, तो उसको देखो, उसको पढ़ो. Before I plan to deliver a talk over here, friend of mine, Dr. Ghanshyam is here, his son is appearing. He is a student of JNU, he is doing PhD there. Okay. So he is also appearing, I think. In the mains, he is writing mains. So he gave me few books of his son. So the full last day, I just read few of the pages, 40, 50 pages, to know, because paper 4 is the new entry. It's a new induction. So for me also, it is new because we never read it. Some ethics, integrity, aptitude, then the case studies, they were never been asked except in the interviews. Definitely in the interview, they used to put some situation before the candidate and he was or she was supposed to respond. There was a magazine, CSR, Competition Success Review. So that magazine, on the basis of the memory contest, and it was a contest. They used to give awards also and some payment also to the contributor. On that basis, they used to publish the model interviews. So we used to read, and during our days we found the more or less same type of the interview, and even today also the mock interviews. You must join the mock interview, then you can realize that there the case studies, questions like the case studies are also being put before you. The one journey was mentioned that earlier it was 2 attempts and the age was just 23. During our days, attempts were 3, the age was 26. Then it was again enhanced to 28. I do not know today. And the attempts were kept 3. Today the attempts have been enhanced to increase to 6 or 5. So for us, it is not so relevant today to discuss this journey. But the thing is, more important is to keep your notes ready and to keep in the mind, beginning from today itself, what to reply in the interview. Because every day when you are exposed to your friends, to the society, something you are observing, and your attitude and your aptitude is engraved in a you are at the atomic level, you are developing certain type of the habits. So very carefully you should read and interact with your colleagues. Now I'll share a few of the that type of the situation which may come in your paper 4. This GS paper 4, ethics, integrity and aptitude, the case studies, it weighs 125 marks, 50% of the paper. I have not seen the old papers. I do not know how many case studies they asked for, but let me share a few from the real life and from my service, and few I read in the books the last day only. While discussing these case studies, I'll also share with you the meaning of certain terms. Say, are you aware of what is ethics? Anyone? Yes. It is a set of, exactly. It tells you these set of behavior, these set of the rules, these values,
they tell you how to distinguish right and wrong. Are you knowing what is moral values at the individual level? At the individual level. So now the question is, before us at so many times, there is some dilemma. Then there are canons, there are principles, how to come out of that dilemma. Same you have to mention. Very nicely it has been given in the books, or you can discuss with the seniors, or we will help polluters to prepare few 50-40 pages to, when you prepare for paper 4, they can, these pages can help you. Let me tell few of the, such dilemmas. You might have come across in the newspapers or so, there is a fake encounter by the police. No, everybody knows it is unethical. Why it is unethical? Because the profession of a police officer is not allowing it. Because he is never been given the right to kill someone. He cannot take away the life of anyone. So this is not only unethical, it is criminal as well. In the same way, if there is third degree torture in the interrogation, this is also unethical because his profession is not allowing. The departmental rules are not allowing. Likewise, there are some ethical behavior by the doctors, by the advocates. Say, if a doctor is there, he says, I will not treat the terrorist. And as you have seen in the films, Indian movies, कि उसको चोट लग गया, गोली लगने के बाद वो आया और डॉक्टर के पास he said, no, I will not operate upon you. So he is denying. Now the question is whether his ethics is allowing or not. See, there is a conflict. Sometimes there is a conflict between ethics and the morality. How? Let me put before you two type of the situation, two case studies. The one, it happens generally in the offices when you are appointed or you are posted either as a collector or a subdivisional collector or as a civil servant or as a police officer. In your office, visitor will come. The person from the public will come. You are giving good attention. हाँ साहब बताइए क्या बात है, ओह ऐसे हो गया, फिर आप फ़ोन भी करते हैं उसके लिए, उसका एक रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं. देन यू मार्क द रिप्रेजेंटेशन टू योर सबॉर्डिनेट आल्सो. फिर आप फ़ोन भी कर देते हैं, पीए को भी कह देते हैं हैव ए फॉलोअप. और हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पीए उसकी रिप्रेजेंटेशन को कहीं एंटर भी करता हो ताकि कंटिन्यूसली फॉलोअप हो. एंड दिस इज योर बिहेवियर, this is your departmental actions. He is satisfied. You are also satisfied. System is going on. But all of a sudden, after getting up from the chair, she or he simply asks, जनाब आप कब आए? एकदम से आपको पता है ये काम 15 दिन महीने से पहले नहीं होने वाला, आपको पता है ये काम 3 महीने से पहले नहीं होने वाला, लेकिन बिकॉज यू नो इट प्रोफेशनली, यू नो, अब आपने उसको सच बताना है या उसको ऐसे ही कह देना हाँ 15 दिन ऐसे करना, हफ्ते 15 दिन में पूछ लेना, या आप क्या जवाब देंगे? हमें फ़ोन कर लेना, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये काम समय लगेगा. आप कैसे उसको डील करोगे, ये आपके ऊपर उस वक्त कई सिचुएशन आ जाती हैं और ऑल ऑफ ए सडन यू हैव टू डिसाइड क्विकली, सडनली. उसी वक्त आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा. वो आपकी एक आदत का हिस्सा होना चाहिए कि किसी को ब्लफ ना करें. जहां ये ट्रेन किया जाता है आपको, किसी को ब्लफ ना करें, उसको समझाएं कि इसमें समय लगता है, इसको बहुत छोटा करने में आप पीछे ना पड़ें
किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो वो किसी बाऊ के हाथ पे कुछ पैसा रख जाएगा कि जल्दी होए मेरा काम। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देयर इज ए हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल इज वेल नोन फॉर टाइप ऑफ द सर्जरी। बच्चों का छोटा बच्चा, द ओनली सन, उस सर्जरी के लिए जो उसके हार्ट में छेद है बच्चे के, 2 लाख रुपया लगता है। उसी सर्जन के पास पूरे शहर में वही सर्जन एक अच्छा है। आप उस हॉस्पिटल में गए, काउंटर पे काउंसलिंग के लिए जिस लेडी ने आपको अटेंड किया, उसको आपने बताया देखिएगा मेरा एकमात्र बच्चा है और मुझे सर्जरी कराना है, और मेरे पास ये 2 लाख रुपया, वो छोटा सा फ्लैट मेरे पास था, या ये 20 लाख रुपया, वो मैंने बेच के ये पैसा इकट्ठा करने का सोचा है। आप सो एंड सो डॉक्टर हु इज़ नॉन वेरी फेमस सर्जन, उससे मेरी मुलाकात कराएं। अब वो सर्जन तो वहाँ से हॉस्पिटल छोड़ के चले गए, और हॉस्पिटल का नाम वैसे ही चल रहा है। नाउ उस जो काउंटर पे आपकी काउंसलिंग हो रही है, उसके सामने देयर इज अ डायलेमा। अगर अपनी प्रोफेशनल एथिक्स देखी, हॉस्पिटल के विरुद्ध कहें कि नहीं वो डॉक्टर तो चला गया, तो एक पेशेंट चला जाएगा, एक केस चला जाएगा, उसको अपनी पगार भी लेनी है, और उस पर यह एलिगेशन भी लग जाएगा कि आपने तो पेशेंट को भगा दिया, और देयर इज ए रिकॉर्डिंग एज वेल, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो सारी टॉक भी रिकॉर्ड हो रही है। शी कैन नॉट से नो। उसके अंदर का जो मोरालिटी है वो ये कहती है ऐसा आदमी, इतना जरूरतमंद आदमी जिसने अपने घर भी बेच दिया हो, उसको मैं ये कैसे कहूँ कि ऐसा एक और भी हॉस्पिटल है शहर में, वहाँ भी इतनी कॉम्पिटेंसी है, आप वहाँ जाके भी ऑपरेशन करा सकते हैं, एंड सो सर्जन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट दिस हॉस्पिटल। तो ये ऐसा जो डायलेमा होता है जिसमें आपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, तो आपका यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आपके प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आपके मोरल प्रिंसिपल हैं, दे विल सेव यू। अनेक बार आपसे ये पूछा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। होप यू अंडरस्टैंड इट। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे ना, जो टर्मिनोलॉजी है उसको बड़े ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसको डिस्टिंग्विश करते रहो। आपने कभी अपने यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, हाँ, उसको ज़रूर अच्छी तरह से देख लेना आप। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस भी आपने देखे होंगे, वो भी अच्छी तरह से देख लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कोई है आप में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक बात बता पाए? एनीवन? क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब हुआ? एनीवन दिस साइड? अरे ये तो बड़ी बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए ना। वो परली तरफ कोई उधर। अच्छा चलो, मैं एक सिचुएशन देता हूं आपके सामने। आप ये देखें, मुझ पे एक एलिगेशन लग गया और मैं ही उसका इंक्वायरी कर रहा हूं, या मुझ पे नहीं लगा तो मेरे ऑफिस पे लग गया। मेरा ऑफिस में इंटरेस्ट है, या मेरे परिवार के किसी सदस्य पे, रिश्तेदार पे लग गया, मेरा कुछ इंटरेस्ट है। मैं अपने इस तरह के काम को मैं जज नहीं बन सकता जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो या मेरा अपना ही केस हो। आप बात को समझ रहे हैं? एक और बात कि हमने एक इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद उस इंक्वायरी में दोष साबित हो गया, अब हमें उसको पनिश करना है। तो क्या हम उस एम्प्लॉय को उस इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी देंगे
अगर उसको कॉपी नहीं देते तो ये कोई जस्ट और फेयरनेस नहीं है। वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। पनिशमेंट मैक्सिमम ये है, या हम उसकी 3 इंक्रीमेंट बंद कर देंगे, ये भी एक पनिशमेंट है। ये जो मैं आपको बताया कि ए पर्सन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन केस और वेयर ही हैज इंटरेस्ट, या हम ये कहें कि हमने उसको डिफेंड करने के लिए मटेरियल ही नहीं दिया, दोष कौन सा है उसका, इसी तरह से हमने किसी को बगैर सुने ही पनिश कर दिया, तो उसको एप्रोप्रिएट हियरिंग का एक मौका देना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएट हियरिंग का मतलब वेल डिफाइंड है लॉ में। आपका यहाँ पे नेचुरल जस्टिस में इतना ही पता होना चाहिए कि उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग होनी चाहिए। सो द कैनन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, हमने आपको 3 कैनन बताए, 3 प्रिंसिपल्स बताए। इसी तरह से अभी जैसे बात हो रही थी कि अनबायस्ड, there should not be tilt on this side or that side, it should be unbiased. These are the canons of the natural justice. ये सब गुड गवर्नेंस में ही आते हैं एंड यू शुड नो। ओके, मैं आपको 5 ऐसे सिचुएशन में ले जा रहा हूं जिसमें यू काइंडली रिप्लाई, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। आप स्कूल में हैं, during the school days your habit is bullying and fighting with the other your friends. ऐसे में कईयों से दुश्मनी भी हो जाती है और आपका बोलचाल भी बंद हो जाता है। सच फेलो जिससे यू हैड ए बिटरनेस, उसको चोट लग गया। द क्वेश्चन बिफोर यू इज ही इज from the opponent group, what will you do? आप हेल्प करेंगे, आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप उसका कोई उपचार करने में मदद करेंगे, या आप उसको इग्नोर करेंगे? दिस इज द सिचुएशन। एवरी डे आप इस तरह की सिचुएशन को अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करें। मोर डिस्कशन the more paper 4 you will score. 3 बातें जनरली दे आस्क फॉर। ऑप्शंस क्या हैं, विच ऑप्शन इज द बेस्ट वन, एंड व्हाट इज द डायलेमा। सो हर सिचुएशन में सी डॉक्टर गोयल विल लेट यू नो, ही विल टेल यू। अखबार में द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में whenever Dr. Goyal, he is telephonically telling me about some new enactment or some problem, मैं उसको केस स्टडी के एंगल से देखता हूँ। बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड कि आप केस स्टडीज पे कुछ कर लो, तैयारी कर लो। तो एवरी डे समथिंग इज अपियरिंग इन द न्यूज़पेपर और आपको सारा केस स्टडी वहीं मिलेगा, उसी में से एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। एक और वन मोर, हमारे पास टाइम है ना? ओके, ओके। देखो, एक पुलिस ऑफिसर है, वो उसने फायर ओपन कर दिया। अब रियल लाइफ में क्या होता है, फायर इज द लास्ट रिजोर्ट। ऐसे नहीं करते फायर कभी भी। मॉब होती है, सबसे पहला हैंडल करने का तरीका यह है कि आप मॉब को डेवलप ना होने दें। तो हम धारा 144 लगाते हैं कि गैदरिंग ना हो। फिर भी गैदरिंग हो गई है तो हम असेस करते हैं कि आदमी कितने हैं, फिर हम उनको यूनिफॉर्म से डराते हैं। तो हम पुलिस को, यूनिफॉर्म को बुलाते हैं, उनको देख के थोड़ा सा वो दबे तो कोई वायलेशन ना करे। फिर उनको आगे पीछे से हम पुलिस वाले खड़े कर देते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना करे, किसी की दुकान ना जलाएं। कई दफ़ा मॉब जो है वो 5000 की गैदरिंग क्रॉस कर जाती है और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर 900 की नफरी में से जो हाथ में होते हैं
वो बाकी कोई छुट्टी चला गया, कोई कोर्ट अटेंडेंस पे चला गया, कोई ड्यूटी पे चला गया, आपके पास जो हाथ में है वो 200 पुलिस वाला है। तो ऐसे में 5,000 के ऊपर हम हैंडल नहीं कर सकते। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स जो है ना अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से कोई कॉर्डनिंग करते हैं, फिर वो कोई चक्रव्यूह बनाते हैं कि क्या करें, अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह। तो कोई थोड़ा लाठी चार्ज, ज़्यादा लाठी चार्ज, किसी कोने में लाठी चार्ज, या ऐसे ही डंडा पटक दिया, इस तरह से उनको, या घोड़े दौड़ा के उनको डरा दिया, ऐसे उनको डरा के तितर बितर करते हैं। तो वो जैसे डिस्पर्स होता है, मोब जैसे डिस्पर्स हो गया, मोब इज ओवर, तो कभी फायरिंग नहीं करते। उनके पास कुछ रबर बुलेट्स भी होती हैं, सब नीचे करना होता है, सामने कभी नहीं। लेकिन किसी मूर्ख पुलिस वाले ने फायरिंग कर दिया, फायरिंग में एक्सपायरी हो गई। एक रागनी, एनीवन फ्रॉम हरियाणा? हाँ, या देयर वाज a Ragini competition. So in the evening there was gathering, and all of a sudden some wrong happened, और वो भगदड़ हो गया। कंट्रोल करने के लिए किसी मूर्ख ने फायरिंग कर दी। फायरिंग तो आसमान में की थी, वो लग गई, कैजुअलिटी हो गई। नाउ डायलेमा कम्स। वो कहते हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इट्स ओके। अब कोई सेल्फ डिफेंस था नहीं तो किसके आदेश से गोली चलाई? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर रहा है। इट हैपेंड समवेयर इन दादरी इज वन टाउन इन हरियाणा। सो अ सीनियर फेलो ऑफ माइन फ्रॉम द स्टेट सर्विसेज, तो ही वाज नैरेटिंग कि वो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गोली चल जाती है। तो एक दिन तो रागनी कंपटीशन में ही गोली चला दी। मैं कहा वो मूर्ख है आपका डीएसपी, उसको समझाओ। तो वाई नॉट यू मेक अ कंप्लेंट टू द डीजीपी कि ऐसे मूर्खों को क्यों बैठा रखा है। फिर वो कहेंगे कि जी आप इस पे साइन करो कागज पे। द पुलिस विल से टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुट ए सिग्नेचर कि आपने आदेश दिए हैं। नाउ हियर इज ए डायलेमा, विल यू डू और नॉट? विल डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स। फिर एक बाद में एक इंक्वायरी होएगी, इंक्वायरी में वो अपीयर होंगे, इंक्वायरी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपीयर होएगा। हो सकता है कोई सिटिंग जज या रिटायर्ड जज जुडिशरी साइड से हो जाए। और सिस्टम से बाहर की जब इंक्वायरी होएगी तो वो इस तरह से फेवर नहीं करते। यू हैव टू फेस द म्यूजिक देयर। एक और सिचुएशन, एवरी डे वी आर इन एवरी डे बेसिस, ऑन डेली बेसिस मंत्री जी के फोन आते हैं, जैसे साहब बता रहे थे अभी। It is implementation of scheme. Let us say Narega is a big scheme. In one of the districts, which is a backward one, in Haryana, it is a nearby to Delhi, Mewat. In the implementation of a scheme, say few 50 crore rupees have been pumped into the district, which is to be utilized in 2 months only. वहाँ का मिनिस्टर जो उस इलाके से है, ही सेज दिस अमाउंट शुड बी यूज्ड इन दीज 10 विलेजेस। You are the state Narega commissioner, or you are the district collector who is looking after the Narega, being in charge of the district. Onus is on you how to utilize, whether to go for uniformly for all the villages, or to say yes to the the suggestion and advice or requirement of the minister. Every day such dilemma will come to you. There you will get a phone every day, not of a minister but of a local politician. Someone will come to you, I am a sarpanch of so and so village, साहब हमारे गांव में कोई पैसा दे दो। Now it is up to you whether you will do this distribution after making a criteria. Generally there are given principles and given criteria is there and guidelines are there.
will you sidetrack the guidelines to give a favor to that sarpanch who is, वो बार बार आपके पास आता है, he has become friendly to you? Will you oblige or not? This is a dilemma. You came to know that there is bungling in the utilization of funds for the Narega, and you are the inquiry officer. When you conduct the inquiry, it is revealed that many muster rolls are fake. The laborers, their Aadhars are fake, and their attendance is also, it is also forced. And the money is going in the accounts of those workers, Narega workers, who really never existed. So, what will you do? इसी तरह से what happened? It happened with me. I was a Narega commissioner. The Sarpanch, there is an allegation on the Sarpanch, the opposite party, who lost the election. They are saying, जनाब, इसने पैसा खाया. मैंने कहा कैसे खाया? कि जनाब इसने ना जो अकाउंट खुलवाए, 5 अकाउंट इसने खुलवाए या 10 खुलवाए बैंक में जाके, वो अकाउंट ही झूठे हैं. हमने इंक्वायरी में बैंक वाले को बुलाया. बैंक मैनेजर ने कहा कि जनाब मेरे पास तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स आए, ये आदमी आए, ये फोटो आई, मैंने तस्दीक कर दिए. तो आदमी तो है. तो मैंने कहा कि बताओ आदमी तो है. बोला जनाब आदमी भी है, अकाउंट भी सच्चे हैं, आधार भी है, सारी चीज है. मैं कहा फिर झूठ क्या है? क्या इन्होंने काम नहीं किया? जनाब इनका जो पैसा गया ना इनके अकाउंट में, वो जो कार्ड होता है स्वाइप करके पैसा निकालने का, व्हाट यू कॉल इट? नो एटीएम कार्ड. वो 50-100 एटीएम कार्ड सरपंच साहब ने अपने घर में रखे हुए हैं. पैसा तो आपने अकाउंट में डाल दिया लेबर के में, और वहां से ये स्वाइप करके अपने पैसे निकाल लेता, आधे इनको देता, आधे अपने पास रखता है. अजीब सी इंक्वायरी है. कोई डिपोज नहीं कर रहा इस बात को. अब हमें तो उसमें लगा कि कोई सच्चाई है, लेकिन कोई एविडेंस ही नहीं आया. हम भी डायलेमा में हो गए, क्या करें अब? ऐसे सिचुएशन आपके पास प्रतिदिन आएगा. एविडेंस कुछ कहता है, धरातल पे चीज कुछ और होती है. मौके पे हमने नाप तोल कराया, देयर वाज नो लॉस, वो सब ठीक था. बट द वे साइफनिंग हुआ या किसी का शेयर कटा, अब ही फेल टू प्रूव इट. कुछ हुआ ही नहीं उसमें, कोई प्रूव नहीं कर पाया. वो ये एक मनगढ़ंत एलिगेशन के तौर पे इंक्वायरी क्लोज हो गया. सो सच टाइप ऑफ डायलेमा यू विल फेस 5 more case studies. You know very well. टिहरी डैम हुआ ना, टिहरी बना, years back, and recently हिल्स में सिक्किम is happening. इसमें हिमाचल में चल रहा है. Every day there is slides, this and that. What happens whenever we decide that some dam will be constructed in this area for the catchment purpose, and then some hydroelectric project will be installed on the lower side. So there is a displacement. There is a loss to the flora and fauna. So diversity is, lost. Displacement of many villages. Villages are very small. So under such a situation, generally there is this SOP. Standard operating procedure is that first we go for the impact assessment studies. Then we look for those who are displaced. We compensate them through many methods. कोई उनका घर है तो उसको असेस करते हैं, जमीन है उसको असेस करते हैं, उनको पैसा देते हैं. साथ के साथ हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको स्किल ट्रेनिंग देके उसको जॉब भी दें. ये जो you will get such type of SOPs well written in the books. So you must read SOPs while deciding and writing such type of case studies. You should know which act
you should know what is the SOP. You should know, is there any case decided by the apex court, or is there any precedence? So with this knowledge, you should solve the case studies. Two more, 1 minute each. One employee is very habitual of taking the leaves. Saab chutti de do, saab chutti de do. One fine day he is coming to you. You are the senior most officer, head of the office. बिल्डिंग में सबसे सीनियर आप हैं. ही इज सेइंग माई वाइफ का फ़ोन आया है और वाइफ कह रही है कि बच्चा अगर छुट्टी नहीं देंगे तो बीमार ज़्यादा है और डिप्रेशन में भी है, और आपने विद द सेम इम्प्रेशन आपने छुट्टी नहीं दिया और बच्चे ने सुसाइड कर लिया. अगले दिन पूरा सिविल सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट में स्ट्राइक हो गया कि साहब बड़ा निकम्मा है, उसने छुट्टी नहीं दिया, और देखो बच्चा इसने ही लॉस्ट हिज चाइल्ड. यू नो द कोर इशू क्या था कि उसकी एक फैमिली प्रॉब्लम है. यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैमिली प्रॉब्लम, यू शुड बी सेंसिटिव, यू मस्ट नो किस एम्प्लॉय का जो आपका सबॉर्डिनेट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता तो यू शुड बी सेंसिटिव. कई दफ़ा ऐसे हादसे होते हैं, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक. वन मोर कन्फ्लिक्ट. आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो कि आपके दूर के रिश्ते में है, आपको नहीं पता था, किसी ने आपकी शिकायत कर दी कि इन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. यू वर नॉट नोइंग इट. How you will handle such a situation? Generally, हमारी नौकरी में the civil servant is not posted. कई स्टेट्स का तो लॉ ये है कि क्लास 1, कोई भी क्लास 1 है, उसको होम डिस्ट्रिक्ट में कभी पोस्ट नहीं करते, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में उसके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार हैं, वो उस पर प्रेशर डालते हैं. अनएथिकल प्रेशर भी आता है कि साहब बच्चे को एडजस्ट कर लें, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिला दो, साहब हमें कोई टेंडर दे दो, साहब हमें किसी ठेकेदार से मिलवा दो, साहब ये ठेकेदार इसकी पेमेंट कर दो, ये मेरा दोस्त है, इसने काम करा, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ. तो इस तरह के प्रेशर्स आते हैं. तो हम क्या करते हैं, उसको उस ज़िले में ना लगा के साइड के किसी ज़िले में पोस्ट करते हैं. दिस इज़ ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो ऐसे भी आपके पास प्रेशर्स आते हैं इन द सर्विस. There are peripheral issues and there are core issues. Two examples. The 10-year girl, she died in Jharkhand because of the starvation. Reason being, the ration card of her family, it was not linked to the Aadhaar. Peripheral issue है इस यहाँ पे एक, और एक core issue है. पेरिफेरल इशू है लिंकेज, कोर इशू है माल न्यूट्रिशन. नाउ बीइंग अ सीनियर मोस्ट ऑफिसर, आपने पेरिफेरल इशू पे नहीं जाना, कोर पे जाना है. दूसरा एग्जांपल, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन राशन शॉप पे मना कर दिया गया है, दो द राशन कार्ड्स आर वैलिड. क्यों मना किया? बिकॉज द थंब इम्प्रेशन, वो कनेक्टिविटी इशू के कारण से थ्रू नहीं हुआ. आधार लिंकेज जो थंब इम्प्रेशन है वो थ्रू नहीं हुआ. तो यहाँ पे जो कोर इशू है वो ये है कि आपने राशन बांटना है, कनेक्टिविटी पेरिफेरल इशू है, कोई ना कोई मैनुअल सिस्टम भी पैरेलल रखना चाहिए. यदि ये ऐसी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की है तो प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व करेंगे. एंड देर आर मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दिस. Time is over. Thank you so much for listening. I'll request Plutus to distribute my pages amongst candidates, which I'll
provide after 10 days or so, 50-30 pages. Then later on we can expand the case studies also. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your words. Now, Dr. Subramanian Lakshminarayanan, sir, will be taking leave now because of some schedule. Thank you, sir, for the time and guidance. It was pleasure having you. Sorry, sir. Yeah, sir. Still going. Thank you. Thank you. कोई एक हो गया Frame change. Frame change करो. Guys, please be seated. Please be seated, guys. Thank you. Okay. Now, how many of you face challenges when it comes to staying updated on current affairs? Determining which news is crucial and which is not can be puzzle. Well, today we are fortunate to have a Dr. Professor P Goyal with us, a seasoned expert who has added a numerous and guidance have played a pivotal role in journey. Thank you, madam. Thank you. Respected, yeah. विदा, yeah. आप हिंदी सब समझ लेते हैं ना? हिंदी चलेगा ना? ओके. आप जो है, मेरी जो हाइट है 5 फुट 4 इंच है. आप ये देख सकते हैं कि एग्जामिनर कैसा होता है, ये देख ले. पेपर सेट करने वाले कैसे होते हैं, ये देख सकते हैं आप. यूपीएससी के, पीसीएस के, ये सब. मेरा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स है, और मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स जो है सबसे मुश्किल काम है. वेरी डिफ़िकल्ट, विच यू डोंट लाइक जनरली, एंड ऑलवेज सर्च शॉर्टकट मेथड्स फ्रॉम द मैगजीन्स, फ्रॉम सम नोट्स लाइक दैट है. अब मैं आपको जो है, मैंने अपनी इवोल्व की है, द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच आई इवोल्व. पहले तो मैं अपना बता दूं, मैं SP गोयल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा हूं मैं 36 साल, 36 ईयर्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था. जो आप मशरूम खाते हैं, मैं चीफ साइंटिस्ट भी रहा हूं. जो मशरूम खाते हैं आप, बटन मशरूम खाते हैं जो, वो थोड़ा सा मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन हरियाणा में स्टार्ट किया था मैंने. एंड फॉर दैट आई आल्सो गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इन मशरूम. सो मशरूम का भी ऐसे ही जो है, जैसे मैं आज ये लेके आया हूँ, उसी पैटर्न पे मैंने मशरूम जो जब जानते नहीं थे 93 में, तो मैंने स्टार्ट किया था. नाउ इट इज़ वेरी पॉपुलर. अब ये जो इवोल्व किया है, मैंने पिछले 5 साल स्टडी किया आपका करंट अफेयर्स. आफ्टर रिटायरमेंट आई वाज प्रिंसिपल इन यूनिवर्सिटी कॉलेज इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. हम इकट्ठे थे सब डॉक्टर साहब. तो ये करंट अफेयर जो है, ये क्या है, ये सब मैं जो आपको, क्योंकि मैं आपका पार्टनर बन के काम करूँगा. क्योंकि मेंटर बन के काम करने में पार्टनर में फ़र्क है. मैं डेली क्या करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ, वैसे तो इन्हीं ने शुरू करवाया था मेरा. मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ 4 घंटे, कई दफ़ा तो 7 घंटे पढ़ते हैं. उसमें से क्या निकालता हूँ, आपको ना सुनने की ज़रूरत है. ये बड़ा केयरफुली सुने आप.
अखबार में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो आया हूँ आपके 110 प्लस के लिए आया हूँ, नॉट 88। आपके प्रिलिमिनरी में जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, प्रिलिमिनरी वो बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे सबसे मुश्किल प्रिलिमिनरी लगता है। जब आप प्रिलिमिनरी में पास ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा है स्टडी का, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। यू शुड बी वेरी सेफ, मीन्स 110 आने चाहिए आपके। वो कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। प्रैक्टिकली जो है मैंने स्टडी किया, पिछले 5 साल रिसर्च किया इस पे। ये मेरे नोट्स हैं, डेली बनाता हूँ मैं। आई राइट 7-8 पेजेस। आप एज स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं एज एग्जामिनर पढ़ता हूँ यूपीएससी का। ये मैं आपको सर्कुलेट कराऊंगा सभी अपने। अब ये देखिए, आप ये सर्कुलेट कीजिए, आप जस्ट वापस दे देना ये प्लीज देखिए। हम आपको प्रिंटेड मटेरियल दें। ये देखो कितनी लेबर एवरीडे करते हैं, ये देखो। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इवोल्व किया कंसेप्ट करंट अफेयर्स की। मुझे पता नहीं है एकेडमी में क्या है, किसी में भी मेरी अपनी कंसेप्ट है। मैं सुबह ये 2 अखबार पढ़ता हूँ, एक आपका हिंदू, एक इंडियन एक्सप्रेस। अब इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा पेज कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को लास्ट में टाइम मिला, IAS ऑफिसर को पहले मिला है। हमने तो वायदा किया था मैं अपना टाइम आपको दूंगा, लेकिन मुझे घड़ी को दिखाई नहीं देता, मेरी दूर की नजर कमजोर है। चलो अब ये जो है, मैंने एक जो है ये इस सेंटर में प्लोटस में एक मॉक टेस्ट दिया, कंप्लीट मॉक टेस्ट। आपने देखा हो, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मैंने बनाया है। इफ़ यू सी इट क्रिटिकली, आप 50% से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकते कोई भी। मेरा कोई भी मॉक टेस्ट, चाहे मेरे से पॉलिटी का बनवा लो, हिस्ट्री का बनवा लो, यू विल नॉट गो अबव 50%। बिकॉज हमारी जो है यूपीएससी से इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। यूपीएससी से इंस्ट्रक्शन ये है कि उन बच्चों को निकाल दो जो सीरियस नहीं है, क्रिटिकली नहीं पढ़ते। मुझे पता है ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको अभी इसमें कॉपी में है, मुझे पता है ये क्वेश्चन 99% बच्चे नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मैंने डाला एक मॉक टेस्ट में, जब डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी एक्सपायर हुए, सभी को पता आपको। डॉक्टर स्वामीनाथन से मैं 81 में मिला था यहाँ पे IRI में, पहली बार मैं यहाँ मिला था उनसे। इज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। मैंने क्वेश्चन क्या बनाया आपके लिए, द हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ व्हीट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम मेक्सिको एंड इट वॉज सेंट बाई डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। मुझे पता है ये क्वेश्चन जो है 100% बच्चे गलत करेंगे। दोबारा बोलता हूँ क्वेश्चन को मैं, हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ व्हीट सीड वाज इम्पोर्टेड इन 1965-66 ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टाइम फ्रॉम मेक्सिको। क्या इसमें कोई स्टेटमेंट गलती है मेरे? एनी फैकल्टी या एनीबडी फैकल्टी में बता सकते हैं? ओके या एनीबडी? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है, एज एग्जामिनर बन के इसलिए डाला है कि मुझे पता है कि ये बच्चे जो ना, कोई बच्चा कर पाएगा जो बड़ा क्रिटिकल होता है। वो 99% बच्चे जो ना क्रिटिकली नहीं पढ़ते नहीं आप। इसलिए क्या है, जैसे चतुर्वेदी साहब ने बताया था ना, उनके बाद मुझे जो है यही बात मैं बताना चाह रहा था। प्रिलिमिनरी में हमारी फेलियर क्यों होती है? 88% क्यों आ रहे हैं अभी 200 में से? मेरे MSc में जो है 87% थे, BSc में मेरे 86% थे। जब मैं प्रिलिमिनरी में बैठूंगा मेरे 88 भी नहीं आ रहे। इट मीन्स दिस इज आवर अप्रोच इज डिफरेंट, गैप है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने क्यों क्वेश्चन डाला ये कि ये सारे पढ़ेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन का सभी पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी आया है पिछले दिनों। इसमें क्या है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाया है मैंने। हाइब्रिड सीड जो है, यदि हम हाइब्रिड सीड मंगवाएंगे, कभी भी नहीं मंगवा सकते बाहर से। उस टाइम टन्स में आया था, 1000 टन्स। ये चतुर्वेदी साहब जो उस टाइम जो है, इनको ज़्यादा पता है, उस समय के हैं। ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं। हाइब्रिड सीड को तो हमें हर साल खरीदना पड़ेगा। यदि हम हाइब्रिड सीड मंगाते हर साल, हमारा जो है सारा ही पैसा उसमें चला जाता। दो सीड्स वर नॉट हाइब्रिड, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और आप सारे करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने एक वर्ड हाइब्रिड डाल दिया।
बीच में जाने के। ये भी बता दो हाइब्रिड होता क्या है? हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड सीड, जैसे आप बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, उसमें क्या होता है, वो सीड मेल फीमेल से बढ़ा के ना हर साल खरीदना पड़ता है, उसको आगे नहीं यूज कर सकते फर्दर। ये आपके प्रीलिमिनरी में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वीट सीड वहाँ से आया मैक्सिको से, वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का था, वो हाइब्रिड नहीं था। एक बार मंगवाया, उससे हमने आगे वैरायटी तैयार कर ली। ऐसे क्वेश्चन इसलिए डालते हैं, हम थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। नॉन सीरियस बच्चे हैं, उनको ट्विस्ट देते हैं ऐसे। और ये भी हमें पता होता है पेपर बनाते हुए, ये 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं, आपको समझ ही नहीं आएंगे। एक टेस्ट अभी और दिया है मैंने, अभी छपने वाला है, उसको चेक करना आप। मैं देता हूँ इससे, न्यूज़पेपर से। कल जो है एक न्यूज़ आई, आपने पढ़ी हो फ्रंट पेज पे, मानसून पे थी, मानसून रिसीड होगी, पढ़ी आपने? उसमें क्या क्वेश्चन बनता है, कोई बना सकता है जी? पुराना हो गया। उसमें मैंने क्वेश्चन क्या, मेरे को भी नहीं पता था। देखो एक चीज़ देखिए आप, करंट अफेयर जैसा है, मैं रोज़ाना 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं मेरे से, दोनों न्यूज़पेपर से। मैं इसको बिल्कुल स्क्वीज कर देता हूँ, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं ना, ऐसा करते हैं हम। ये इसमें से मेरे से 15 से 20 क्वेश्चन निकलते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो इसमें से और बन जाए मेरे लिए। हो सकता है आप बना दे 2-4। उसमें मैं बताता हूँ, साउथ वेस्ट मानसून से मुझे भी नहीं पता था। जितने क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मुझे पहले दिन नहीं पता होता उनका आंसर। मैं भी आपकी तरह होता हूँ, मैं भी देख के ही बता सकता हूँ। इसका मतलब करंट अफेयर्स कितना मुश्किल है, जिसका हमें अगले दिन किसी को भी नहीं पता होता आंसर, पहले दिन उसी दिन पता चलेगा आंसर सबको। इतना ही ज्ञानी है, बहुत मुश्किल है। इसलिए करंट अफेयर्स का मैंने जो एनालिसिस किया है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपके करीब 25 क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक में भी आपका स्टैटिक जो आता है ना, उसमें आप करंट, मैं बहुत सारे एग्जांपल से बता सकता हूँ, अभी टाइम कम है। स्टैटिक और करंट मिला दिया, और यू विल बी सरप्राइज्ड, जब आपका प्रिलिमिनरी होगा तो मेरी स्टेटमेंट में 20-25 स्टेटमेंट मिलेगी आपको मेरे टेस्ट से। क्योंकि और कहाँ से देंगे, मैं जब सारा ही कंप्लीट पढ़ दिया इसको 4 घंटे, और इसमें से प्रिलिमिनरी और मेन दोनों के क्वेश्चन निकाल देता हूँ। 3-4 मेन के निकलते हैं, बाकी 15-20 प्रिलिमिनरी के निकलते हैं। आप जब पिछले साल के क्वेश्चन जो देखते हैं, पिछले साल के पेपर, उसमें भी आप मिसगाइड होते हैं कई बार। सपोज एक क्वेश्चन आ गया आपका, तंपारा लेक है, टम्पारा लेक पढ़ा आपने कि सुना किसी ने? टम्पारा लेक, इसका मतलब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। टम्पारा लेक जो है मयूरभंज में, उड़ीसा में है। अब जो ना 4-5 साल के बाद इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आपका एग्जाम में आ गया, तो आपको ये लगेगा लेक भी आ सकती है। नो, ये करंट में था उस समय, 5 साल पहले। इस पर कोई इशू था सुप्रीम कोर्ट का किसी का। हम सोचते सारी लेक पढ़ दें, सारी लेक याद कर देते, कोई तो आएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको उस समय आपको नहीं पता चलेगा, 5 साल के बाद जब तंपारा लेक पढ़ेंगे ना, आपको ये समझेंगे कोई भी लेक आ सकती है। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। तंपारा लेक में क्या हुआ, एनजीटी के अभी रिसेंट जो है डायरेक्शन आई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करो वहाँ सारी। जो सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी की समझ लो कोई डायरेक्शन आती है, दैट बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिमिनरी एंड मेन। अब उस एंगल से आप जो है, उस एंगल से नहीं पढ़ते आप, यूपीएससी के एग्जामिनर के हिसाब से नहीं पढ़ते। कभी कभी सोचा आपने ऐसा कि ये पेपर सेट करेगा ना, वो क्या मांग रहे हैं वो, आप ऐसा नहीं पढ़ रहे। इसलिए डिफ़िकल्टी है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा प्रीलिमिनरी में। चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल सही कहा था, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इतना ही डिफ़िकल्ट पेपर आएगा। जो पेपर तो हम लोगों ने बनाना है ना, प्रोफेसर्स ने, इतना ही आएगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शन वहाँ से हर चीज़ की ये आपको इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, आपके न्यूज़पेपर में नहीं आती। हमारे पास जब इंस्ट्रक्शन आती है, उनका इतना पुलंदा आता है। बना के भी देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, बहुत कुछ आता है जब एग्ज़ाम सेट करता है ना। और मेरे ख्याल में शायद एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी का 1 दिन में सेट होता होगा, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। तो एग्जामिनर आपसे बहुत आगे है, टेक इट ग्रांटेड। हमें ये पता है कि आप क्वेश्चन इसको नहीं कर पाएंगे जो मैं दूंगा,
इसलिए क्या किया मैंने, डेली मॉक टेस्ट शुरू किए मैंने अखबार से। भाई आप जो है क्या है कि आप 4 घंटे ना तो आपको पढ़ना चाहिए, ना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 4 घंटे पढ़ो। अब ये है कि आपको यदि आप 1 घंटा आपके पास है तो मैं समझता हूँ 1 घंटे में आप प्रीलिमिनरी और मेन दोनों करवा दूंगा। कैसे होगा? प्रीलिमिनरी मैंने करके आपको रोज़ाना टेस्ट दे दिए, सारे क्वेश्चन निकाल दिए। सपोज जैसे ये आपका इंडियन एक्सप्रेस है, एक तो हमेशा ये करो, मेरी अपनी हैबिट है, पता नहीं आई मे बी रॉन्ग, पता नहीं, बिना लाल पेन के मैं नहीं चलता अखबार को। यदि मैंने उस पर न्यूज़ पे, कल मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, एक कोई मुथुवन जो है ट्राइब है, मुथुवन ट्राइब है तमिलनाडु में, वो मैं अंडरलाइन करना भूल गया। इंडियन एक्सप्रेस में आया था क्वेश्चन कल या परसों, और अंडरलाइन ना करके ना मैं उसको आधा घंटा लगा ढूंढने में, ढूंढ ही नहीं पाया उसको, मैं नहीं ढूंढ पाया उस क्वेश्चन को। तो आप कैसे ढूंढ दोगे? मुथुवन ट्राइब है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया अभी 2 दिन पहले कि वहाँ पे नीलगिरी ताहर जो है प्रोजेक्ट चलाई है उन्होंने, उसमें उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दे आर हैविंग इंडिजिनस नॉलेज, और वो उसको पहले से कंजर्व कर रहे हैं, उनकी नॉलेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो जो है मुझे क्वेश्चन मैं अंडरलाइन नहीं किया, जब मुझे नहीं मिला आधे घंटे में तो आपको कैसे मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ जो आज आप तैयारी कर रहे हैं अखबार पढ़ के ऐसे फेंक दिया, दिस इज ऑफ न्यू यूज़। बेशक आप 15 घंटे पढ़ लें, आपका प्रीलिमिनरी नहीं होगा। बिना नोट्स के मत चलिए। ये जो टॉपर्स बताते हैं ना अभी नोट्स की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। यदि वो बताते हैं तो गलत बता रहे हैं। भी टॉपर भी आपने बनना है, आप जो स्टेटमेंट दोगे आपके फाइनल है। आज आप यहाँ बैठे, टॉपर भी आपने बनना है ना। तो ये जो है इसमें एक न्यूज़ आपके मैं एक सुन रहा था एक दिन कि इंडियन एक्सप्रेस बेटर है या हिंदू बेटर है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट थी वो, बड़ी फुलिश डिस्कशन, मतलब मैं हैरान रह गया क्योंकि वो अखबार नहीं पढ़ते। सर ये वो ना अखबार पढ़ते होते तो डिस्कशन ना करें, मतलब यार इसमें भी है, अच्छा है ये भी, मैं बताऊंगा कैसे। दोनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं, मैं दोनों इसलिए पढ़ता हूँ कि ये ताकि कोई चीज़ रहे ना। कल इसमें जो है एंजल टैक्स के बारे में आया, एक इकोनॉमी का पेज आता है इसमें, उसमें लेफ्ट में जो है एक एक्सप्लेन्ड होता है, एक्सप्लेन्ड इकोनॉमी। वो एंजल टैक्स, ये आपका जितने भी जो है यूपीआई, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है। वही तो लिखना है आपने एग्जाम में, ज़्यादा फिलोसफिकल थोड़ा ना लिखना है। एंजल टैक्स का मैंने क्वेश्चन बना दिया, उसमें से उठा के 4 स्टेटमेंट दे दी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट कितनी करेक्ट हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, वो मैंने क्वेश्चन बना दिया। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे चतुर्वेदी साहब करे थे ना, अब मैंने इसका और निकाल दिया, रिफाइंड कर दिया कि 2 अखबार भी काफ़ी है 3 के बजाय। इसमें इकोनॉमी पेज जो आता है ना, दैट इज़ वेरी नाइस। और एक पेज और आता है, कौन सा कोई बता सकता है? इंडियन एक्सप्रेस का कोई बेस्ट पेज? इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपको ये टेस्ट कर रहा हूँ कि आप कितना अखबार पढ़ते हैं, कितने सीरियस हैं। मैं बताइए कोई एक पेज बताइए इंडियन एक्सप्रेस का जो आपके एग्जाम में कम से कम आपके मेन एग्जामिनेशन में 30-40 नंबर बढ़वा देगा जीएस में। यस, इस पे मैंने रिसर्च की। एक्सप्लेन्ड पेज समझो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है मेन के, इट्स सो नाइस। मैं बता नहीं सकता, मेरे अपने 40 साल हो गए मुझे अखबार पढ़ते हुए, इतना बढ़िया पेज है वो। संडे को नहीं आता, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन वो आएंगे जैसे मान लिया जो इजराइल का ये हमास का चल रहा है, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन आएगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आएगा। कितना अच्छा है, आपको तो बड़ा बड़ा मटेरियल मिल रहा है। उसको सिंपली आपने क्या करना है, एक तो कभी भी अखबार की कटिंग मत रखो, अननेसेसरी बर्डन मत रखो अपने ऊपर ना। कई लोग करते हैं ना ऐसा, कटिंग काट के रख ली फिर देखेंगे, नहीं। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए जैसे मैं करता हूँ, मेरी कॉपी एक बार सर्कुलेट कीजिए आप। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये जो है आप न्यूज़पेपर के आप अपने उसमें डाल दीजिए नोट्स में, और इसको फेंक दीजिए। फिर बार बार इसको बोझ मत मरिए, जैसे हरियाणा में हम कहते हैं ना, बोझ मत उठाओ इसका ज़्यादा। ये आपको स्ट्रेस इसलिए होता है आपको। यदि आप प्रॉपर वे से तैयारी करेंगे, स्ट्रेस का कोई नहीं, इंजॉय करोगे आप। अब ये देखिए आप, इसमें मैं एक पहले ऐसे निशान लगाता हूँ मैं सुबह उठ के,
1 घंटा मैं घूम के आता हूँ, उसके बाद चाय पी के फिर मैं बैठता हूँ, फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मैं 3-4 घंटे इसमें लगाता हूँ। और मैंने जो है करीब करीब 2 महीने एक्सरसाइज किए। डॉक्टर साहब ने सच किया, इनके साथ इवोल्यूशन किया है। करीब करीब रोजाना 20 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं प्रिलिमिनरी के, 2-3 हो जाते हैं मेन के। और मेरा ध्यान वहाँ रहता है कि एक तो नेशनल प्रॉब्लम हो जो आमतौर पर डिस्कस हो रही है, हमें अफेक्ट कर रही है। एक आम पब्लिक को क्या अफेक्ट कर रही है चीज़, हमारे आसपास है, हम अलर्ट नहीं हैं। आपके सबके पास आधार कार्ड है, कभी आधार कार्ड में आप देखोगे उसमें बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है इट इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कभी भी आपसे आगे पूछा जा सकता है ये चीज़ें। ऐसे हम लोग ये देखते हैं आप कितने अलर्ट हैं। वी स्टेटमेंट आया था किसी क्वेश्चन पे? कब नहीं आया तो जरूर आएगा ये ऐसा। तो अब ये देखिए आप, ये एक्सप्लेन देंगे। जब मैं मेरी एज है 65 से अब वो है, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप तो 7-8 घंटे में कैसे थकेंगे? मैं तो नहीं थकता क्योंकि मेरा ये पैशन है, आई इंजॉय दैट। जब इंजॉय करेंगे, देखिए मैं ये निशान लगाया है, ये निशान लगा के ना ये सारे, फिर मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी में नोट करता हूँ। और ये जो 2 कॉपी लेके ऐसे ऐसे मेरी ना 2 महीने में काफ़ी कॉपी भर गई हैं, पूरी फुल हैं। वो मैं चाहता हूँ प्लोटेस्ट के थ्रू आपको ना वो नोट्स भी जो है आप चेक करो कैसे बनाते, समझ के ना। हाँ देखिए ये आप अखबार भी आप जो है एक बार डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, चलते जाओ आगे आगे। ये मेरे लिए तो फालतू है, मैं इसलिए लेके आया था मैं कैसे बनाता हूँ ताकि आप थोड़ा सीखें। अब आते हैं 110 प्लस का मेरे माइंड में है ना वो जो, उस पे आते हैं कैसे आएंगे आपके। फॉरगेट 100, आपने 100 से ऊपर लेने हैं। 88 क्या है? 88 कुछ भी नहीं है मार्क्स। 88 इसलिए आपको मुश्किल लग रहे हैं 90, क्योंकि आपने एग्जामिनर का दिमाग नहीं पढ़ा, हमारा दिमाग नहीं पढ़ा। अभी हम पेपर कैसे सेट करते हैं। आपके चतुर्वेदी साहब जैसे बता रहे थे उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, हमेशा जो है मेरे पास सारी एनसीईआरटी हमेशा रहती है, सारे यही। एनसीईआरटी से बढ़िया कोई नहीं है। क्यों एनसीईआरटी क्यों बढ़िया है, कोई बता सकता है? वाई एनसीईआरटी इज बेटर देन अदर बुक्स? हैं जी? नहीं, मैं बता क्या है। आप पहला पेज देखिए, उसका एडिटोरियल बोर्ड देखिए, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कितने प्रोफेसर हैं उसमें करने वाले, एक एक लाइन को चेक करते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, चतुर्वेदी साहब ने जो बताया ना एनसीईआरटी, उसमें जो है मैं हमेशा क्या करता हूँ एनसीईआरटी की चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी एक्सरसाइज करता हूँ। जो हम पहले करते थे 8वीं 9वीं क्लास में, उसको आप भूल गए, आप उसको भूल गए, दोबारा से पहले करते थे ना, उसके क्वेश्चन आंसर लिख के लेके जाते थे। वो जब हम पेपर बनाते हैं तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। हम आपसे आगे हैं, बताया ना मैंने, हम एक्सरसाइज पहले देखते हैं कि क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है ना वो बड़े 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 लोगों ने बनाए, प्रोफेसर्स ने बनाए, प्रोफेसर्स ने। एक तो ये है कि आपने जो भी करना है वो नोट्स बना के करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है तो नोट्स, छोटे नोट्स होने चाहिए। डॉक्टर साहब जो है, हम लाइब्रेरी में जो है 8-9-10 घंटे लगाते थे। HU की लाइब्रेरी थी, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है वो, इंडिया की बेस्ट लाइब्रेरी कह सकते हैं हम। ये डॉक्टर साहब छोटे छोटे नोट्स बना करते हैं, इनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, आप देखोगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो मतलब ये मैं नहीं कहता कि बहुत सुंदर होनी चाहिए आपकी, इसमें IAS में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 110 के प्लस लेने के लिए आपको 2-3 काम करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक तो एग्जामिनर का माइंड पढ़ो, मेरा माइंड पढ़ो। जब प्रोफेसर के पास आएगा ना, मेरे पास सपोज हिस्ट्री का पेपर आ जाता है, मेरे ख्याल में जो है ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जहाँ साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, मैं आपको एक 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बना के दूंगा एज ए साइंस स्टूडेंट। और मेरी वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रोजाना न्यूज़पेपर में आते हैं। एक तो मेरी ये टारगेट रहता है, रोजाना डिस्कस होते हैं, मान लो नोटा है, टेंडर वोट है, कुछ भी है जो भी हो रहा है इलेक्शंस में। वो क्वेश्चन का मेरे माइंड में ये रहता है कि 50% से ज़्यादा ये टच ना कर पाए इन क्वेश्चंस को। जब मैं बढ़ाता हूँ क्वेश्चंस को तो ये रहता है कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाए, इसलिए आपके 50% नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इसलिए
ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। आपके पास नोट्स होंगे तो आप आखिरी टाइम तक कर सकते। कई लोग क्या करते हैं कि 10-10 किताबें रखेंगे। एक गलती और करते हैं आप लोग, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बहुत अच्छी किताब है। एक टॉपर इंटरव्यू दे रहा था कि मैंने ये 20 बार पढ़ी है। भाई यूर, मुझे नहीं कहना चाहिए कि वो मतलब टॉपर तो बन गया, ठीक है, मार्क्स ले गया होगा कहीं ऑप्शनल में कहीं, लेकिन यदि वो नोट्स बनाता तो उसका आधा टाइम लगता। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अभी 200 पेज हो, हमारी कैपेसिटी है पढ़ने की। हमें जो है, आप क्या करते हैं, आप पोलूटेस्ट से पढ़ेंगे ना, फिर क्या करेंगे, विजन की भी निकाल के लाएंगे बुकलेट करंट अफेयर्स की। राजेंद्र नगर में जाएंगे, कुमार इस तरह के कुछ बुक सेलर हैं, वहाँ ये लगेगा तो बहुत सुंदर, अच्छा बना रखा है पहला क्वेश्चन, इसको भी देखो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर नोट्स फ्रॉम द न्यूज़ पेपर, दैट इज वाई यू आर एंकरिंग आफ्टर दैट। ऐसा होता ना प्रैक्टिकली। हमारे समय में प्रॉब्लम थी कि हमारे पास मटेरियल नहीं होता था, अब सरप्लस ऑफ मटेरियल आपको पीछे ले जा रहा है। यदि आपकी सक्सेस नहीं होती तो वो इसलिए नहीं होती मेन में कि आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, आपके पास अपने नोट्स नहीं है। एक चीज़ और मैंने एनालिसिस की है, यदि आपके ऑप्शनल में 330 आ जाएं, एग्रीकल्चर में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 330 आ सकते हैं, आई हैव द मॉडल आंसर्स। 330 आ जाए तो यूपीएससी का आपको लेटर मिल जाएगा। ये मेरे अपने एनालिसिस है, अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। और हमारे साथ ऐसे थे जिनके 330 से ज़्यादा आए हैं उस समय में। इसका मतलब यह है कि यदि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा है, आपके 330 आ जाते तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, क्योंकि आपका लेवल आ गया वो। अभी परी पे फोकस कर दीजिए, इनको परी करना है। हाँ, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये लाइन मुझे जो है ना, क्योंकि मेरा अपना एनालिसिस था, रिसर्च है। अब 110 प्लस के लिए सबसे पहले आपको 25-30 क्वेश्चन, ये करंट के है ना, ये सबसे मुश्किल आपके लिए। इंटरनेशनल लोकेशंस 100% जो है मैं रोजाना डालता हूँ। कैसे कैसे आपने ढूंढना है क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ तरीका। जैसे मान लिया लीबिया में फ्लड जाए, आपने पढ़ा होगा सबने, आप तो काफ़ी मेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं। लीबिया में फ्लड जाए, उसका क्या रीज़न था? जैसे एक तो साइक्लोन आया था, एक दो डैम टूट जैसे। उसके बाद वो जो मेन लोकेशन थी ना, अब तो मैं भूल गया वो, क्योंकि इतना अभी इस एज में याद नहीं रहता। जो सिटी अफेक्ट हुआ ना सबसे ज़्यादा, वो मैंने मैप के साथ डाला है। और मैंने थोड़ा सा, आप एक वीडियो मेरी देखना, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि समय नहीं है आपके पास। 9-10 अगस्त तक मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे, न्यूज एनालिसिस बाय डॉक्टर SP गोयल। एक जरूर देखना, एक देखना। उसमें मैंने कोशिश ये करता हूँ कि इंटरनेशनल लोकेशन जितनी मैंने जो अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे अब ये आप बताइए, आप तो रोजाना पढ़ते हैं, आप इतनी अच्छी एकेडमी में भी, ये कौन सा सिटी अफेक्ट हुआ है अफगानिस्तान में जब ये साइक्लोन आया? विच सिटी वाज अफेक्टेड एट दैट टाइम? लेट मी आस्क सिंपल क्वेश्चन, विच सिटी वाज द एपिसेंटर ऑफ साइक्लोन? यस, एग्जैक्टली। ऐसे पढ़ना है आपने, निकालने क्वेश्चन। हम ऐसे निकालते हैं एग्जाम में आपके लिए। लीबिया में फ्लड जाएगी तो कौन सा अफेक्ट हुआ? फिर हम साथ में ये भी देखते हैं, जब लीबिया में फ्लड जाएगी तो उसके आसपास कौन से कंट्री हैं, बॉर्डरिंग कंट्री, वो भी आपको पता होना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। ब्लैक सी का जो है, ब्लैक सी ग्रेन डील है। अब ब्लैक सी ग्रेन डील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सारे वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। उसमें जितनी पोर्ट्स हैं, उड़ीसा पोर्ट है, रेनी पोर्ट है, जो भी पोर्ट है, मुझे अब ज़्यादा याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई, वो सारी मैंने मैप में दिखा दी। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुछ बात करो ज्योग्राफी की कोई भी ना, ये मैं मैप में देखता हूँ जाके, फिर मैप यूज़ करो साथ में, विदाउट मैप याद नहीं रहेंगी। इंटरनेशनल का सबसे आसान क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, मुझे सबसे अच्छे इंटरनेशनल के लगते लोकेशंस। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में एक पेज आपका वर्ल्ड पेज आता है, दोनों में अच्छा है। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी अच्छा है, पहला ही आता है कई बार तो इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें आप कोशिश ये करो, इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारी चीज़। जैसे किसी में मान लिया कूप आ गई, अब आपका ये है कि मिलिट्री कूप जैसे आती है, आसपास जो है इस क्वेश्चन बन जाता है किस किस कंट्री में आई। मान लिया वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है तो आपको सबका ही पता होना चाहिए, माली है, गैबन हो, वेट एवर इट इज़। ऐसे पढ़ो आप। एग्जामिनर से साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, आप बहुत पीछे हैं एग्जामिनर से। आप नेक्स्ट वो आएगा, एक बार उसको चेक करना, जो नेक्स्ट आएगा ना अभी 1-2 दिन में, ये प्लूटस से ये करंट अफेयर्स का मैंने डाला 15 दिन का।
सितंबर के लास्ट सितंबर का डाला है, उसमें आज क्वेश्चन देखना कैसे बनाता है एग्जामिनर। फिर आप क्या है उसको क्रॉस चेक करना अपनी पढ़ाई से, कैसे पढ़ते हो आप, उससे आप चेंज करोगे अपनी स्ट्रेटजी को। क्रॉस चेक करना कि मैं जो है मैंने तो अखबार बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, मेरे को तो ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। मेरे हमारे सबके साथ 700 बच्चे कई यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए हैं। वो कई बार पूछते हैं मेरे से कि सर आप जो न्यूज़ भेज रहे हैं, जो क्वेश्चन भेज रहे हैं वो अखबार में है ही नहीं, कौन से पेज पे बताओ, हमने सारा देख लिया। न्यूज़ तो पेपर की हम पता नहीं कहाँ से निकालते। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, साउथ वेस्ट मानसून रिसीड्स, मैंने तो उसमें से क्वेश्चन निकाल दिया, मुझे भी नहीं पता था, मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। उसमें लिखा था 17 सितंबर एक जो IMD स्टैंडर्ड डेट लेती है राजस्थान से, 17 सितंबर को ये मानते हैं भी उसके बाद वो रिसीडिंग की डेट है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता था आज तक, इतना पढ़ लिया हम लाइब्रेरी में। 17 सितंबर स्टैंडर्ड डेट मानसून का जो रिसीड होती है। कई बार आपसे ये पूछ लेंगे जो ये जो है आपकी कौन ये इसमें आती है जो सर्दियों में आती है, कौन सी होती है डॉक्टर साहब, ये अक्टूबर से दिसंबर कौन सी, नहीं ईस्ट मानसून कौन सी है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून का मान लिया आपसे मंथ पूछ लिया, आप रोजाना पढ़ते हैं अखबार में, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज कर देंगे। मान लिया मैंने पूछ लिया आपको ये दिसंबर से जनवरी तक आती है, कब आती है ये, कब इसके स्टैंडर्ड महीने क्या हैं, जो स्टैंडर्ड IMD का वो हमें पता होना चाहिए। कौन से महीने हैं भैया, इंडिया की बात है, कौन से हैं कोई बता सकता है? चलो आप साउथ वेस्ट मानसून बता दो जो हमारे आती है नॉर्थ इंडिया में, वो कौन से कौन सा महीना लेता है IMD ना, डेट्स नहीं देखो, क्योंकि हमारा जो है सारा देश हमारा जो है मानसून पर डिपेंड करता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी क्वेश्चन कभी आ सकता है आपको, आप इस इंपॉर्टेंस समझिए क्वेश्चन की। देखिए जो स्टैंडर्ड है उससे हम अलग नहीं जा सकते। IMD ने जो फिक्स किया है, IMD ने वो 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून मानना है, आप आगे नहीं कर सकते, पीछे हमारे हाथ में नहीं है। और जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसको मानना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने मानना है। अब ये तो याद करने पड़ेंगे, डेट्स नहीं है, कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट मान के चलो आप। अब ये चलो हमारा तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, मैं क्या करता हूँ जितने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है ना आपको सारे दूंगा, मिलेंगे तो चतुर्वेदी साहब ने ठीक कहा था प्लूटस के थ्रू, ऑल एग्रीकल्चर क्वेश्चन जो भी आते हैं, IFS क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, आपको ज़्यादा नहीं पता, रेनफेड एग्रीकल्चर क्या है, पल्सीज ऑयल सीड, ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। दूसरा आपका 40 मार्क्स का मेन में आएगा, मैं देख रहा था आपका सिलेबस देखे थे पिछले, मैंने क्वेश्चन स्टडी किया है, वो बहुत आसान है, वो आपका मेरे जो है हम आपको उसके मॉडल आंसर ही दे देंगे, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है सारे, वो आपको एक दिन में तैयारी हो जाएगी, ऐसे टाइम बचाना आपने। तो एक तो न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स का 25-30 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें से कम 20 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। रोज़ाना मैं जो है प्लूटस के थ्रू रोज़ 15-20 क्वेश्चन डालता हूँ, वो सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे सोल्व करने में, 5 मिनट आप उसमें, और एक मैंने टेलीग्राम चैनल में 5 क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें 1 मिनट लगते हैं, न्यूज़पेपर से डालता हूँ सिर्फ। उसका फ़ायदा ये है आप एक गैप है एकेडमीज में, उसमें आप में एक गैप है बहुत बड़ा, आप जो है प्रिलिमिनरी की तैयारी करोगे शुरू फरवरी मार्च में, चतुर्वेदी साहब ने ठीक बताया, दोनों की इकट्ठी रखो। आप फरवरी मार्च में क्या करोगे मैं बताता हूँ, आपने हमारे इस एकेडमी के नोट्स ले लिए, उसके ले लिए, उसके ले लिए, करंट के ले लिए, आपको ये नहीं पता वहाँ कौन तैयार कर रहा है, उसने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए, वो छूट गया आपके भी। इसलिए आपने नोट किया होगा कि सारे के नोट्स आप इकट्ठे कर लो, सारे क्वेश्चन फिर भी नहीं मिलेंगे उसमें, नोट्स आप अपने तैयार करो। करंट अफेयर्स तो ऐसी चीज़ है जो मैंने बताया शुरू में, मुझे कल के क्वेश्चन नहीं पता, ना आते मुझे, ना डॉक्टर साहब को आते, मैं कई बार इनसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब आपको आते थे, कहता एक भी नहीं आता था। मैं डॉक्टर साहब ऐड करूँ, ये देखो बस 1 मिनट, अभी जो कहा जा रहा है कि
आप उस वक्त अपनी तैयारी को शुरू करेंगे जब ढेर सारा मटेरियल मार्केट में आ जाता है। ये वो एग्जामिनर, वो पेपर सेटर जो इस तरह के मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो कैजुअल होता है। अगर कोई खोजी एग्जामिनर के धक्के चढ़ गए तो आपके फिर तो आलिए मार्क्स। ऐसे एग्जामिनर बहुत हैं जो बहुत लेबर करते हैं, वो तो एक एक क्वेश्चन को तरीके से रिसर्च करके एक एक आइटम को बनाएंगे। तो आप जो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस और जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे अभी आईएमडी की बात हुई, तो उन अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं, उन अथॉरिटीज़ का एक जो भी उनकी प्रेस रिलीज हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। आपने भी अपनी रिसर्च करनी है, ये नहीं है कि उठाया मटेरियल और पढ़ लिया, वो जमाने चले गए, वो पहले के होते थे। काइंडली इस चीज़ पे ध्यान दें। आईएमडी में पूछना चाह रहा हूँ किस मिनिस्ट्री में आता है? जस्ट स्मॉल क्वेश्चन फॉर मी। आईएमडी जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये भी मतलब क्या है कि हम आसपास जो चीज़ें हैं ना उसको प्रोबिंग नहीं करते। बहुत सारों को नहीं पता होगा, लेकिन एग्जामिनर के लिए सबसे आसान क्वेश्चन है। ये देता नहीं एग्जामिनर जनरली, इतना सस्ता क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन नहीं देता। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये आपसे प्रीलिमिनरी में हम लोग ये क्वेश्चन इस तरह के डाल देते हैं। मेरे ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट में। ये जो है आपका, ये बताइए आप रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रोजाना आ रहे हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में काम करता है? क्या काम है इसका? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब उन बच्चों के लिए हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये मुश्किल क्वेश्चन में नहीं है हमारे भी। ये इस तरह के जो है मैं तो एक प्लांट पैथोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, इतनी जो समझ लो कि इतना मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक प्लांट पैथोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे होता है ना, आर्थो का अलग है, मेडिसिन का अलग है, हमारे भी ऐसे ही है। एक प्लांट पैथोलॉजी का प्रोफेसर जब ये पूछ सकता है मॉनसून का ये आईएमडी जो है किस मिनिस्ट्री में है, तो हम क्वेश्चन भी ऐसे बना सकते हैं, इससे बढ़िया पॉलिटी भी बना सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर सब में। और मेरे क्वेश्चन सारे में मिलेंगे आपको। न्यूज़पेपर का फ़ायदा क्या है? रोज़ाना जो ना आर्ट पे भी आएगा, एनवायरनमेंट पे भी हर क्वेश्चन आता है, पॉलिटी पे भी। कभी जो है मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर आपकी क्लास में अलग से देने आऊँगा, उसके बाद आपकी इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे ख्याल में मेरा कोई स्टूडेंट यदि प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं करता, दैट ओनस इज ऑन मी नॉट ऑन यू। यदि मेरा कोई स्टूडेंट प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं करता ना, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। मैं 1-2 घंटे की क्लास लेना चाहता हूँ कभी प्लोटस में, फिर आपको डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। नीचे का Thank you so much, sir. While we have explored a wide range of essential expect today, one stand out as crucial is happiness. Exam can be truly daunting, and it's important to understand how student can create a study environment that foster happiness and well-being during the preparation phase. To shed light on this vital topic, we have Mr. Vikas Gupta with us, well-known teacher in the field of UPSC and distinguished faculty member. The stage is yours, sir. First of all, a very thank you to all of you to come here. And a very thank you to the Hindu Zone for organizing this event, giving us this opportunity to interact with all of you. I know we all know happiness, but we don't understand it. More often we are under pressure, FOMO we have discussed, fear of missing out. Yeah, I am preparing, sitting in this room 24 hours. Yeah, my friend is doing that job, going here, going there. What is this happening to this? I don't like this phenomena. So we always have a fear of something we want, we don't have. And that fears puts us under pressure. And we are like, okay, I'm preparing. Okay, fine, 6 hours. I did this strategy. I took this 2 notes. I took this topper's idea. I'm preparing. I finally make clear. What if I could not clear? What I would do then? These are some standard fear we all experience. On that, I want to talk about how to stay a bit of motivated here. Understand difference between sincerity and seriousness.
Sincere is the one, as some of the speaker told. When you study for 6 hours, have some time for yourself if required, and some other curricular activity if you want. Not compulsory. If you want, if you can have. If you don't have it, fine, doesn't matter. If you like reading, read it. If you like doing something else, do it. But it is not like if you are preparing for civil services, I have to study for 14 hours. कहाँ लिखा है? Where this written rule is there? It all depends upon person's personality. How much you can grasp in 6 hours is more important than how much you would like to grasp in 12 hours. 6 hours is sufficient. So be sincere. If you're studying, then you're studying. Know that Instagram reel is going on in the back. नहीं, ये नहीं चलेगा. Study for 6 hours, but study with due sincerity. Keep your phone aside. Take it, put it off if required. Study for 6 hours. After that, if you want to do something. But I will not say you will not get demotivated. We all do. It doesn't matter what you become. It will always be a person you want to be. You become IAS officer. ओहो, काश मैं मिनिस्टर बन जाता. अब आया मजा जिंदगी का मेरे को. मिनिस्टर बन के ओहो प्राइम मिनिस्टर बन जाता और बढ़िया लगता. ये ऑरा मुझे पसंद आया. So there will always be a person you want to be. It doesn't matter what you become. There will always be a bigger fish you want to achieve. So better is try for the bigger and be contented with what you get. That is very important. Understanding that everyone cannot get what they want. Acknowledging, I will try my level best. That differentiates sincere and serious. Some people 24 hours book, oh fine, brush kar rahe hain, book chal rahi hai. That kind of person we don't want. Study hard, study focused, but more important, enjoy the process also. Or sometimes you get demotivated, talk to the friend whom you have blocked, you know. कोई नहीं चलेगा, थोड़ा सा बात कर लो, क्या हो गया? Whom you have blocked, talk with him. If required, you're too much demotivated, go outside. एक दिन में, believe me, this world will not change if you are not here. We have a thing ना, we think we are the center of the gravity, we are the earth here. हम नहीं तो दुनिया नहीं, ऐसा नहीं है. People before you have come, people after you will come. आपके होने ना होने से ये अर्थ रुकने वाली नहीं है. So do not think you yourself too important here. So if you want to take a break, take a break. कभी कभार चलता है, इसका मतलब ये नहीं रोज ही कर रहे हैं. रोज नहीं चलेगा. But if sometime you feel demotivated, go out. Some chatting is fine. Some outdoor dinner is fine. Some movies are also fine. But some, not every time. Understanding the difference, sincerity and seriousness. Be sincere. When studying, sometime you're feeling low, go out, have party, enjoys. But for 1 day or 2 days, not for the entire year. Okay? Then all the strategies have been told. You can adopt them also. Now let us talk about other factors you may have in mind. What if I could not clear? Okay, understand, I have always told you, hard work is a component of success. There are numerous other components. For example, you are born physically handicapped and you want to become an IPS. Is it your fault? You are born handicapped. Nature decided you cannot become IPS. So what you can do about it? For example, you have sat here for 3 hours something. Have you any of you thought about what should I do about Palestine now? किसी ने सोचा कि फलस्तीन के बारे में कुछ करना है मेरे को? क्यों? Because you are insignificant. आपको पता है मैं फलस्तीन कर क्या लूँगा? When America, US, UK, everyone fighting, having this Abraham Accord drama, if they could not do anything for Palestine, मैं क्या कर लूँगा? Understand? There are some factors you can control. There are some factors you cannot control. Try to separate them. Work hard is something you can. Success is not guaranteed there. Just as sir, the first speaker said, that they asked me about how you summarize the history, and he said that later Mughal period, later Aurangzeb, they were more into gambling and enjoyment. It was a matter of luck also that he was asked that question. If the examiner may have different orientation, मान लेते सुबह बीवी से लड़के आए थे, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. So he could have asked something else about society. Oh, यार, what do you think about women empowerment? कोई खुद लड़के आए हैं, तो he want a good answer over that. It always depends who is the interviewer. So numerous factors play. Means में, for example, you are prepared very well. You took all advices. You made chart. You did everything. आपकी किस्मत खराब थी. You misinterpreted the question.
इसमें आपकी कहाँ गलती थी भाई? यू डिड तो एवरीथिंग राइट ना. अब at that point of time something flinched, you could not understand, or you could understand but you misinterpreted and you wrote the wrong answer. It was not your fault. You did everything right. Something was not working. So that is what I want to say. First, be sincere, not serious. Be laugh a bit also. Go outside if required. Second thing is focus on hard work. That is what Krishna ji has said in Gita. Nishkam karm. Focus on your goal. Outcome is not thy concern. Here Krishna ji is not saying that outcome is not your concern. He is saying if you achieve it or not is not your concern. Goal must be in mind, yeah. I have to reach to Mumbai ना. ऐसा तो नहीं I will go on कहीं भी पहुंच जाऊंगा. I will have a target. I have to reach Mumbai from Delhi. I will plan accordingly. But if something goes out of turn, something happens which is beyond my capacity to control, so do not blame yourself for that. सबको समझ में आ रहा है what you are trying to say? Hard work is something you can. Success is something cannot guarantee. I personally know a lot of students who are very, very meritorious, who have sacrificed a lot, who are doing very good jobs, who left them for some reasons. Everyone has different reasons. They could not qualify. It does not mean they are good, bad people. For example, there are numerous people. Ravish Kumar could not qualify, became a big journalist. Kanhaiya Kumar, the so-called gang member. I can guarantee if the Congress come to power, he will become a minister or something. So UPSC does not end, and success, always remember, is a composite. Hard work is an essential component, but there are numerous parameters that work together. So with this come another learning: be humble to those who could not. I always take the example of APJ Abdul Kalam, a gold man according to my view. He was going to a seminar or something, he got late, and you know, President of India is given security by armed forces. So there was an army person who was employed in his security. He reached to venue earlier. APJ Abdul Kalam got late. So first thing he did after going there is, he said sorry to that person. Sochi, the President of India is saying sorry to you. You're a soldier, a sepoy in the armed forces, and a President of India is saying sorry. Uska to din ban gaya. Ban gaya, literally din ban gaya. That is you have to be. Just because you are successful, you became IAS, you became this, you became that, it does not mean you are better than other. It just means along with your hard work, some parameters worked. You were born in a good family who could afford good education. Somebody was not that fortunate. Or again, I have told you multiple times in the classes, biases works. That's why all the people in top position are upper caste male. Why they are not females? Are they less talented? Why we haven't have a CGI? भाई 75 साल हो गए, कोई कमी तो नहीं लग रही मेरे को. Equally talented. Because understand, biases always works. You have to fight with those biases also. But at least you can contribute a part, na? Always be humble to those who are below you. That dictates what you are. Success तो बहुतों को मिली. Hitler को भी मिली थी. Hitler also got success. What he wanted to achieve, he achieved. But do we remember him in good name? No. We remember Gandhi, who if he wanted, he could become prime minister, but he was in Bengal trying to resolve a riot. He could become prime minister. कोई मना कर देता गांधी को? इतनी औकात थी किसी की वहां पे? गांधी से बोल देगा आप नहीं बनोगे प्रधानमंत्री. ठीक है, तो understand, if you are successful, be grateful, you worked hard, you achieved, because the composite parameter, you achieved this, and be a bit grateful to the people who below you. At least उन्हें प्यार से तो बुला ही सकते हो. अपने प्यून को बोलने के पानी ले क्या, प्लीज पानी ला दो, इतना बोलने में कहाँ घिस गए आप? उसका तो दिन बन गया. सबको समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, डिफरेंशिएट्स sincereness, seriousness, and understand in spite of all your hard work, you may not achieve success, but that is not the end. Believe in yourself, target for the big, but be happy with what you get. And sometimes FOMO will come in, fear of missing out, तो थोड़ा बहुत मजे भी चलते हैं. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? So these are the things. I will not take your time. मुझे पता है आप लोग वैसी revolution के form में आ चुके हो. ठीक है, you are very tired and you're about to revolt. So these are the few things I want to communicate, and we have been communicating since then. ठीक है, be humble, differentiate sincerity and seriousness, and try for hard working, but do not link hard work to your success. That is the right. You have to do hard work, but success you may or may not. But try करने में क्या जाता है? सबको समझ में आया?
ठीक है, आई होप यू लव समथिंग. चलिए, विद दैट नोट, बाय बाय. Thank you, Vikas sir, for your invaluable and insightful words. Now, I would like to ask like students, if you have any kind of questions or doubt, or you want to talk to like our panelist speakers, there is your chance, last chance basically. Yes. Ashu, Mike. गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है. सर वाइल राइटिंग एन आंसर फॉर एथिक्स पेपर, सर आपने बताया कि कोर और पैरेललिज्म आ जाता है बीच में. और सर वाइल तो होता है कोर इशू, Yes, एक sir. होता है पैराफिरल इशू. यस सर. तो इधर उधर की जो बातें होती हैं, कोर पे आपने ज़्यादा फोकस करना है हमेशा ही, क्योंकि वो ये तो कोर इशू ही है जो आपके कंसर्न को, और जहाँ पे आपकी कोई डेवलपमेंट है, जहाँ कोई डिसीजन है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यस सर. सर माय क्वेश्चन वाज व्हाइल राइटिंग एन आंसर, क्या हमें अपने वैल्यूज को रखना चाहिए या फिर उस आंसर के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के लिखना देखो, चाहिए? आपने मेरी बात नहीं सुनी. I'm मैंने not बीच getting- में ये कहा था कि आपने अपनी आदतें बदल लेनी है. ये जो 1 साल का कोचिंग है, यही तो आपको सिखाना है कि आपने अपने वैल्यू सिस्टम को देखो. अभी एक क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया गया था. Yes, sir. उनकी सोच कुछ थी, वो एकदम से जब तक हम उसको ट्विस्ट करके वहां पेश नहीं करेंगे तो ही विल मिस इट. जैसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया, सर का तो एक्सपीरियंस यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठने का रहा है. उन्होंने बताया कि यदि इफ यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट फॉर द मनी, यू विल गेट 0 मार्क्स. इफ यू आर शोइंग इंटरेस्ट फॉर द फॉर द पावर, you may get 2 marks. If you are showing your interest for the service, you may get 8 marks. तो ये जब तक आप ये एकदम से द मोमेंट यू हर्ड इट, आज का ये टेक होम हो गया. जैसे ही आपने ये सुना, आपका सोच बदला, आपके वैल्यू सिस्टम बदले. अब आपका एक धीरे धीरे एटॉमिक चेंज आएगा, आपकी हैबिट्स में भी आएगा, सोच में भी आएगा. तो आपको जैसे ही इस पेपर की तैयारी करते हैं, आपकी सारी सोच अपने आप वैसी ही हो जाएगी जैसी वो रिक्वायर्ड है. क्योंकि ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं विच मैं जो डाउन करूंगा उनको लिटरेचर में से ढूंढ के और अपने एक्सपीरियंस से ढूंढ के, अपने कोलेग से भी, सीनियर कोलेग से भी कंसल्ट करके, मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, सर्टन कैनन्स वो बना के दूंगा, 1 2 3 4 आपने जिनको ध्यान रखना है इनका आंसर देते हुए. अगर आप उससे डेविएट कर रहे हैं और इसलिए जानबूझ के डेविएट कर रहे हैं, नहीं मेरी तो ये सोच है, नहीं, आपको सोच भी तो बदलनी पड़ेगी. आपकी सोच वो कोई एंटी डेमोक्रेसी सोच नहीं हो सकती, आपको टेररिस्ट नहीं हो सकते, आपको नेशनल सिक्योरिटी के विरुद्ध नहीं जा सकते, आप सोसाइटी के विरुद्ध नहीं जा सकते, आप सोशल वेलफेयर के विरुद्ध नहीं जा सकते. तो ऐसे हमें सर्टन कैनन्स बनाने पड़ेंगे, वो हम लिख देंगे ताकि आप हमेशा ही दिमाग में रखें. जब भी रिप्लाई दे तो एकदम से देखें उसको, ओह ऐसा तो नहीं लिखना मैंने. But sir, what if my point of view is like towards the society, towards the welfare of the society, and the question what it demands is something different? Like वो किसी और के like society के point of view से what if मेरा आंसर सही हो, अगर मैं उस perspective से सोचूं, but overall उसमें जब हम मॉडल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उन मॉडल क्वेश्चंस के साथ डेफिनेटली वो किसी सीनियर के द्वारा मॉडल क्वेश्चंस दिए हुए होंगे. उसका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है. मान लो कि मैं ये कहूँ, आपकी सेंटेंस मेकिंग ठीक करना है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए. बच्चे को ऐसे ही करवाते हैं स्कूल में, कॉलेज में भी. तो आप किसी न्यूज़पेपर को उठाते हैं, उसका एक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद आंख बंद करके आप रीइटरेट करने की कोशिश करते, क्या वैसा सेंटेंस आप बना पाते हैं. ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके सेंटेंसेस बेहतर होते चले जाएंगे. ऐसे ही मॉडल आंसर्स को देख के आप पढ़ के उसका मनन करते हैं,
अपने आप आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है और मुझे इसी तरीके से बताना पड़ेगा। तो फिर आप अपना बहुत जबरदस्ती ना करें, क्योंकि फिर आप अलग थलग हो जाओगे। हाँ जी, कहीं वो नुकसान ना हो जाए। सर मेरा क्वेश्चन एसके गोयल सर से है कि सर अगर हम करंट अफेयर पूरे साल का पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक, डायनेमिक्स टॉपिक कवर होते हैं, तो सबको एक साथ पढ़ के फिर रिकॉल कर पाना एग्जाम के टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, तो इस पे कोई टिप्स? इनकी सारे के एक ही लाइन में सोल्यूशन है कि आप नोट्स नहीं बनाते रोजाना। आप आज की जो न्यूज़ आई है ना वो फरवरी में पढ़ेंगे, जो गैप है। मैं कवर करता हूँ डेली बेसिस पे, बट मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैंने बता दिया। मैं बताऊं आपको, आप पूरे नॉलेज को अपना जो रजिस्टर है, यस सर, उसको बांट दो और उसको वही लिखो। आपने अपना जो रजिस्टर है जिस पे आप नोट्स बनाते हैं, यस सर, उसको अलग अलग 50-60 एरियाज में बांट लो। तो जैसे जो न्यूज़ जिस एरिया की हो, ये मैगजीन और बुक्स भी तो यही करती हैं ना। बस फर्क इतना है कि वो कुछ मिस कर जाते हैं, उनका कंटेंट राइटर किसी चीज़ को छोड़ देता है, वो आपके आगे आ गया और एग्जामिनर ने वो जो है छोड़ा नहीं। क्योंकि सपोज कि एक इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, आपने 5 इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए और एग्जामिनर को वो नोट्स नहीं, उसके पास तो है नहीं। यस सर, क्योंकि यूपीएससी तो ये फेवर नहीं करती ना कि कोचिंग इंडस्ट्री इतनी उठे, ठीक। तो वो तो ऐसा एग्जामिनर को कहेगा नहीं कि जिस जनाब ये हमारे दिल्ली में ऐसे है, ये कोचिंग नोट्स हैं, आप ये लो और अपना पेपर सेट कर दो, ऐसे तो करेगा नहीं। नो सर। वो प्रोफेसर का भी दिमाग यही है, वो भी ये कहता है मेरे टाइम में तो कोचिंग इंडस्ट्री थी नहीं, मैं देखता हूं। तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं। यस सर। तो हमारे जो कोई मैगजीन आई है, बल्कि मंथली जो मैगजीन्स आती है ना, विच आर अवेलेबल टू एवरीवन, उसको तो प्रोफेसर ज़्यादा अजीब सी दृष्टि से नहीं देखता, उसको तो वो रेफर भी कर लेता है। वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है न्यूज़पेपर को डायरेक्ट, जो उसके घर वो वेंडर फेंक के जाता है, तो उसके घर में वो उसका पाइल अप है। तो आपने अपने नोट्स बनाने। ओके सर। हाँ, इस इधर के मटेरियल से वो आप उसको अपडेट कर सकते हो, कुछ चीज छूट ना जाए। तो एक टॉपिक के ऊपर जब आपका पूरा 2 या 3 पेज होते हैं अलग अलग डेट्स को देखा हुआ, तो वो फिर कुछ चीज छूटेगी नहीं। मान लो कि वो आपका रजिस्टर 100 पेज का है, तो उस वक्त 100 पेज आपकी मुट्ठी में है, ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। और मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। यस सर। एट दिस एज मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक साइंस की कॉपी लगाई हुई है, एक ज्योग्राफी, जिसमें एक इंटरनेशनल डाटा में जैसे पता ना कंपार्टमेंट, मैंने पतली 2 ऐसे कॉपी ना, मैंने 7-8 कॉपी लगा ली, उसमें वो चीज़ डालता रहता हूँ, फिर रिवीजन हो जाएगा महीने में एक बार। कॉपी लगा लो, सिंपल है, ये टेस्टेड बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस वो भी एक तरीका है, मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरे पास तो कॉपी अलग अलग है। फिर मैं ये जो मॉक टेस्ट बनाता हूँ तो एक साइंस के जैसे क्वेश्चन निकालने, 4 साइंस के निकाल दिए, 4 उसके ऐसे निकालता हूँ। मतलब आप एक चीज़ देखिए, जब पेपर सेट करते ये ना सोचिएगा अखबार नहीं पढ़ेगा, हम अखबार सबसे आपसे ज़्यादा पढ़ेंगे। एग्जामिनर इज अहेड देन यू, ये जरूर माइंड में रखिए कि हम अखबार से क्वेश्चन निकालेंगे जब हमारे पास यूपीएससी से पेपर सेट करने आएगा। और आप ये सोचते हैं कि एग्जामिनर क्या देखता होगा क्वेश्चंस को, ऐसे हम इसको बड़ी बारीकी से जांच करते हैं। इसलिए आपको हमारे लेवल पे आ जाओगे, उस टाइम आपके 110 आ जाएंगे। एक चीज़ और देखिए, आप 1 सेकंड और लेता हूँ, आप कोई क्वेश्चन देखिए पिछले 2023 का, जब उसका आप आंसर देखते हैं जब तो बड़ा आसान लगता है, जब आप क्वेश्चन को देखते हैं बड़ा मुश्किल लगता है, सुना नहीं होता। जब उसका आंसर देखेंगे तो ऐसा लगेगा हो ये तो आसान था। यस। ऐसा होता है आपके साथ? यस सर। वो इसलिए होता है कि आप जो है जो चीज़ एग्जामिनर चाहता है वो नहीं पढ़ते, वो गैप है। चाहे किसी भी एकेडमी में है, ये मैं नहीं कह रहा, आपको एकेडमी तो फैसिलिटेट करती है ना,
मैंने तो खुद करने पड़ेगा, अपने इवॉल्व खुद करो कंसेप्ट्स को, ठीक है ना। और ये आपको पता चल जाएगा पढ़ते हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है, हमें तो पता चल जाता था। मैं आपको एक इंस्टांस बताता हूँ, मैंने 3 बार मेन दिया और मेरे तीनों बार जो है 760 नंबर आए। मेरे मेन में 760 आए कि मेरे मित्र थे उनकी 14th पोजीशन, मेरा बेटर परफॉर्मेंस रोजाना जब डिस्कशन में सिर्फ ये था, वो ये कहता था बिना नोट्स बनाए आप IAS नहीं बनोगे। मैं उसको कहता नोट्स मेरे पास, मेरे को जब सब कुछ आता है, वो आंसर राइटिंग करते थे। आपका एक लेवल आ जाएगा ना प्रिलिमिनरी का, आपको कोई पेपर दे दो, आपके हर बार 110 के आसपास आएंगे। यस सर। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दूसरा ठीक हो जाएगा। आपका एक जैसे स्विमिंग पूल में लेवल है ना, वो लेवल अटेंड करना, आपने अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको प्रिलिमिनरी में कोई फेल नहीं करेगा, ना मेन में करेगा। Okay, sir. Thank you. I hope that your all doubts has been clear now. Before we end this seminar, if you have any still like questions, last. As we come to the close of this enlightening seminar, I want to express my gratitude each and every one of you for your active participation and engagement. Today has been a day filled with a valuable insight, sheer wisdom, and thought-provoking discussion. Our esteemed speakers have generously shared their expertise, experience, knowledge, and we are truly fortunate to have with us today. Their contribution have undoubtedly left an indelible mark on all of us. I also want to extend a heartfelt thank you to our partners and sponsors, without whom this event wouldn't have been possible. Your support is greatly appreciated. Thank you. No.